Mark Rising, if you want to choose the match ball, please come to the commentary box. Wasim or any of the committee members, if you are here, please, you are wanted. Thank you. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain.
Well, this match played between Sai Sports versus Mark Rising Stars this afternoon. To tell you that Parth Patil, the captain of Sai Sports, won the toss and elected to field first, and in doing so, Parth Patil has won the toss and elected to bat first, and the two openers for Sai Sports are Milind Chavan and Rohit Porwal. Well, Milind Chavan checking his guard, and also that special thing that he does with the bails, as you can see they are marking his guard there. Milind Chavan, a former ex-Ranji cricketer. Quite some years ago he did happen to play there, and sometimes he keeps sharing his experience. And now if you can see his stance there, the way he stands to perfection. Well, outside the off-swing, Kiran Tarlekar there firing in all cylinders wide there to begin with in the form of an extra. First runs coming up on the board in the form of wide. So 1 run on the board there with 0 balls balled yet. Kiran Tarlekar coming in and firing all cylinders to the batsman Milind Chavan. Shot of length there, cries of catch it, and he goes there, the set. Well, the trap was set there, the first ball being balled wide outside the off stump. At the fall of Milind Chavan's wicket, it is Punit Dixit walks onto the crease there, checking his guard. The umpire, so first blood is withdrawn in the form of Milind Chavan. The trap was set up there, slightly short of length and straight to the fielder. One of the better fielders there, Darshan Maikar, in front of the commentary box. Did take a good catch there. Milind Chavan trying to pull it, trying to hook it. Half pull, half hook kind of a shot there, but not connecting properly. On another day, if the ball had to connect, it would have gone past over the fine leg. But today, straight to the fielder at short fine leg, the Darshan Maikar. And to tell you that the first wicket goes down at a score of 1 run. So Tarlekar has done the job there. And it's Punit Dixit to face Kiran Tarlekar. Gone on the back foot and played it there. Fumble there by the fielder at the gully region. What a shot that is off the back foot, cutting it. A square cut to the deep point fielder for a boundary. With that boundary, Punit Dixit opens his account and takes the scorecard ticking along to 5 runs on the board now. And Punit Dixit moves to 4 runs. This is good contest between bat and ball this afternoon for you people who have joined us late, to tell you that the captain Parth Patil of Sai Sports won the toss and elected to bat first. And in doing so, Mark Rising Stars have already drawn the first blood in the form of Milind Chavan. Oh, good ball there, beating completely into the hands of the keeper. Good bowling there after being hit for a boundary there. Kiran Tarlekar pitching it up to the batsman. Punit trying to go onto the front foot and play him. Beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. Good comeback there after being hit for a boundary. With that dot ball, score still stands at 5 runs.
Again, full pitch delivery straight to the cover fielder there. A fielder coming in and fielding in the cover region. Ruturaj Bhate, the fielder. Ruturaj Bhate comes in and fields, importantly, a dot ball. So 2 dot balls in succession. I remember my friend telling me every dot balls are like dust of gold. One more time. Kiran Tarlekar to the batsman Punit Dikshit. Gone to the back foot again to the fielder there at point. This time it is Rohit Desai. Does he field it and also has a shy at the stumps? Nevertheless, fielder covering it at long on, mid on for a dot ball. Slightly change in field now. The mid on goes back onto long on. Punit Dikshit, the batsman, to face Kiran Tarlekar. Wanting a single there, just a gentle push of the back foot, caught on the crease there, standing tall and pushing it towards the cover region. Ruturaj Bhate comes in quickly and fields. Meanwhile, the batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard moves to 6 runs for the loss of 1 wicket. That 1 wicket to go down was of Milind Chavan, caught at short fine leg Darshan Mayekar. And the scorecard reading 6 runs after the completion of 1 over. 1 wide in the form of an extra and 5 runs at the bat of Punit Dikshit. So total reading 6 runs after the completion of 1 over. This is Rahul Wernekar. Rahul Wernekar coming into the act. Rahul Wernekar comes into the act with his bowling quota's first over and innings second over to the batsman Punit Dikshit. This entire over, Rohit Porwal on the other hand is being kept quiet there. It will be interesting to see how he would approach Punit Dikshit to face. Driven straight to the bowler by passing him there, and a fielder coming in and fielding quickly at mid-on. Kiran Tarlekar comes in quickly. Number 99. 1 more run for the taking. With that single as the batsman crossed over, scorecard moves to 7 runs. Good full pitched delivery by Rahul Wernekar up to the batsman, asking the batsman to drive, and in doing so, the batsman driving all along the carpet towards mid-on, and Kiran Tarlekar, one of the better fielders in this side, comes in and fields. The batsman cross over for a single. That gets Rohit Porwal on strike for the first time in this innings to face Rahul Wernekar. Will change in field there. The third man goes back onto the fence, and sweeper cover comes up in the form of point region. Good ball there. What a ball that is at the ball of Rahul Wernekar, pitching it up to the batsman, trying to beat him completely and beaten in the end. Rohit Porwal in 2 minds whether to go forward, behind, caught on the crease there. A half-hearted stretching forward to play that shot. Beaten all ends up into the hands of a keeper for a dot ball. Once again, Rahul Wernekar to Rohit Porwal. Good bowling there again. Rahul Wernekar this time outside the off stump after the ball pitching and leaving the batsman swinging away from the bat and into the hands of the keeper behind stumps.
Shivam Nesarkar, the wicket keeper there behind the stumps, he's come in to keep wickets today. Once again, Rahul wanting to leave the ball there, the ball taking the edge of the bat and going towards the third man. It was not intentional though, but nevertheless, no damage done. The ball going towards third man field coming in and fielding. Batsman crossover for a single. With that single, Rohit Porwal opens his account and takes the scorecard ticking along further to 8 runs for the loss of 1 wicket. That gets Punit Dixit on strike to face Rahul Wernikar. To tell you that, Rahul Wernikar and Punit Dixit played a lot of cricket together. Trying to hit a big swing and a miss there again outside the off-stick. Ball slightly keeping lower than anticipated there. Wanting to drive it off the front foot. Beaten all ends up into the hands of the keeper. Shivam Nesrekar there behind the stumps doing the job of wicket keeping today. And he is doing it in absence of Nilesh Patel. Cut shot there straight to the wideish. Good fielding by Darshan Mayekar. Comes in quickly and fields it. Saved a certain boundary as well. Good fielding by the young lad Darshan Mayekar on the bounce. Did he go to his left side covering about 10 yards. The ball was like a trace of bullet. One more for the taking as the batsman crossed over. They have to settle down for the single. With that single, it also completes the over after the completion of 2 overs. A scorecard reading 9 runs for the loss of 1 wicket. Rohit Porwal is batting on 1 run and Punit Dixit is batting on 7 runs and 1 run in the form of an extra. So 9 runs on the board after the completion of 2 overs. A scorecard reading 9 runs for the loss of 1 wicket. That 1 wicket to go down was of Milind Chavan. And they're going at a current run rate of 4.50 runs per over. For those people who have joined us late this afternoon, to tell you that Sai Sports captain Parth Patel won the toss and elected to bat first, asking Marg Rising Stars to ball, and in doing so they have managed to pick up 1 wicket. 2 overs have been bowled and scorecard reading 9. Kiran Tarlekar. Shot of length there, and the second wicket goes down, trying to play and hook him there straight to the bowler himself in his follow through. Kiran Tarlekar picks up his second wicket in the form of Punit Dixit. A big wicket for Kiran Tarlekar and Marg Rising Stars. They have picked up the second wicket, drawn the second blood in the form of Punit Dixit there. Caught and bowled, trying to pull him, scooped it up in the air. The ball hitting the upper edge of the bat. Upper face of the bat in fact, and scooping up in the air, and Kiran Tarlekar in his own follow through just made it look so simple and took an easy catch in the end. Yash Kalsanavar, the next batsman. Yash Kalsanavar walks onto the crease at the fall of Punit Dixit to the crease. Yash Kalsanavar, another experienced campaigner and in good nick and good form there. A left-hander walks onto the crease at the fall of Punit Dixit. A big fish there. They've already caught 2 big fishes in the form of Milind Chavan and Punit Dixit. Punit Dixit got just 7 runs of the 9 deliveries with 1 boundary. And Rohit Porwal just batting on 1 run. Yash Kalsanavar yet to face in this innings. Very interesting field there. Difficult to say that third man. Third man, gully point cover, mid-off, sweeper cover. Watchfully played there by Yash Kalsanavar off the front foot. Respectfully played there. A forward defensive shot.
onto the pitch area. The ball rolls on. Shivam Nesarkar comes in and fields for a dot ball. Good dot ball there to begin with for Kiran Tarlekar to the batsman Yash Kasanavar. Very experienced campaigner. He's in really good nick and touch and form. Yash Kasanavar to face Kiran Tarlekar. Going onto the back foot and cutting him there to the wideish of sweeper. One run for the taking. With that single taken, the scorecard moves to 10 runs. Yash Kasanavar opens his account for himself and the team. Takes the scorecard ticking along to 10 runs. That gets Rohit Porwal on strike. A very experienced campaigner, Rohit Porwal, has a job on hand to do. Watchfully played with soft hands there towards the coverage, and the fielder comes in and fields. The batsman cross over for a single. I think Rohit Desai, the fielder there. Rohit Porwal played the shot in the cover towards the point. From point did Rohit Desai come in and field at cover region as the batsman crossed over for another single. With that single taken, the scorecard for the ticks along to 11 runs for the loss of 2 wickets. One more run for the taking there. Good shot played off his pads towards mid-wicket area by Yash Kasanavar. Fielder coming in and fielding. One more for the taking. With that, scorecard limps along to 12 runs for the loss of 2 wickets. Marked Rising Stars have really kept it very tight for Sai Sports this afternoon after they were asked to ball first. A big appeal there, more than the ground, the noise coming from the dugout there, that big appeal coming from the dugout rather than the fielders. They knew it that there's nothing like that. Every ball hitting on the pad, the dugout and the fans of Mark Rising Stars feel that there's a wicket for the taking, but you don't get those wickets so easily. Importantly, a dot ball to finish with. With that, it also completes 3 overs and the scorecard reading 12 runs. 3 overs have been bowled and the scorecard reading 12 runs for the loss of 2 wickets. As there would be change in bowling, there would be change in commentary. I asked my co-commentator to take on in Hindi. Pramod Jape. धन्यवाद चेतन बेलूर। तो 3 ओवर में 12 रन बना रही है। 2 विकेट खोने के बाद साई स्पोर्ट्स की टीम 2 दिग्गज बल्लेबाज वापस लौटे पवेलियन में। सबसे पहले बिलिन चौहान, उसके बाद पुनीत दीक्षित एक आसान कैच दे रहे थे अपने फॉलो थ्रू में। दोनों के दोनों विकेट किरण तर्लेकर के खाते में जा रहे हैं। वेलेकर की बहुत खराब गेंद थी, विकेट कीपर ने डाइव लगाई, रोक नहीं पाए, गेंद बनेगी वाइड और वाइड के चलते 4 रन। और तो ये जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो रही है इस वक्त मार्क राइजिंग स्टार्स के लिए। बहुत ही खराब गेंद डाल रहे थे, डाइव लगाई विकेट कीपर ने, अपना पूरा शरीर झोंक दिया था उस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाए। और जले पर नमक छिड़कने के बाद गेंद वाइड बनी और 4 रन भी बने। 5 रन मिलते हुए साई स्पोर्ट्स की टीम को इस 5 रनों का वो तहे दिल से स्वागत करेंगी,
क्योंकि फोकट के जो 5 रन उनके खाते में जा रहे हैं और रन संख्या बनी है अब 17, 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल वेर्णेकर, फिर एक बार ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर डाल रहे थे, इस बार सीधी गेंद बनी और सपाट बनकर गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। एक खराब गेंद डालने के बाद एक डॉट गेंद भी कराते हुए राहुल वेर्णेकर, रन संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है। कुल रन संख्या बनी है 17, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता है साई स्पोर्ट्स के कप्तान पार्थ पाटिल ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, फिर एक बार बल्ला गेंद के लाइन से हटाकर यश कर्सनवर गेंद को जाने दे रहे हैं विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। शिवम नेसरीकर विकेट के पीछे खड़े हैं, उन्होंने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं बना। फिर एक बार सीधे ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को डाल रहे हैं और कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यश कर्सनवर। उस बाहर जाती हुई गेंदों को वो देखकर छोड़ रहे हैं विकेट कीपर शिवम के लिए। और एक वाइड गेंद डालने के बाद उस पर 4 रन अतिरिक्त मिलने के बाद लगातार ऑफ स्टंप के ऊपर वो गेंद को खिला रहे हैं फील्डिंग के मुताबिक, लेकिन कोई स्ट्रोक्स नहीं खेल रहे हैं यश कर्सनवर। हवाई फायर किया है, गेंद आएगी उस वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर या वाइडिश मिड विकेट कहिए, उसके ऊपर गेंद जाकर गिरी है, छक्का बनता हुआ है। लगातार 3 डॉट गेंदें खेलने के बाद एक गेंद सीध में डाल रहे थे, एक कदम आगे बढ़ाकर उस गेंद को हाफ वॉली बनाकर खेला और वो जो मिड विकेट का इलाका है वो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ इलाका है, खाली इलाका है, उसमें उन्होंने हवाई स्ट्रोक खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी, छक्का बनता हुआ। इस छक्के के मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 23 रन 23, 2 विकेट के नुकसान पर साई स्पोर्ट्स। 11 रन आए हैं कुल मिलाकर इस ओवर में। ऑफ स्टंप के बाहर से कट किया उस गेंद को पॉइंट की तरफ, लेकिन पॉइंट पर फील्डर जरूर हैं, हाथ को लगी है गेंद। उस गेंद को रोकने की कोशिश में दर्द से थोड़े से कर्रा तो रहे हैं फील्डर जरूर, लेकिन रन बनाने के कोई अवसर नहीं दे रहे थे और बुरी तरीके से गेंद लगी है उस अंगूठे के आसपास। वो विठल हबीब लगता है उस इलाके में खड़े हैं, उस व्यस्त इलाके में पॉइंट पर उनको गेंद लगी है। फिजियो जा रहे हैं मैदान पर प्रज्वल शेट्टी। कोई ज़्यादा गंभीर समस्या तो नहीं रहेगी क्योंकि फील्डर्स बड़े तगड़े होते हैं और चोट खाने की आदत से बन जाती है खिलाड़ियों को, बहुत जल्दी वापसी करते हैं वो, लेकिन थोड़ा खेल में व्यवधान ज़रूर होगा, खेल थोड़ा सा रुकेगा ज़रूर क्योंकि फिजियो अंदर गए हैं प्रज्वल शेट्टी। ज़्यादा कोई चिंता का कारण तो नहीं रहेगा, लेकिन बाहर तो आ रहे हैं ज़रूर। इसका मतलब ये कि थोड़ा वो समय बाहर बिताएंगे। गेंद उनको लगी है, हबीब मैदान के बाहर जा रहे हैं और सब्स्टिट्यूट फील्डर अब अंदर आता हुआ उनके लिए अच्छे संकेत तो नहीं है क्योंकि हबीब एक अच्छे फील्डर हैं और एक गेंदबाज भी हैं वो अच्छे। सब्स्टिट्यूट आदर्श माली मैदान पर आ चुके हैं। ओहो, ये गेंद तकरीबन वाइड गेंद खेल रहे थे
छोड़ते तो निश्चित तौर पर वाइड होती है, लेकिन उस गेंद को खेला कवच की दिशा में, कोई रन नहीं बना, ओवर समाप्त हुआ। चार ओवर के खेल के बाद 23 रन बनते हुए साई स्पोर्ट्स के लिए 2 विकेट खो रही है। रोहित पोरवाल 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। यश कलसनवर एक छक्के की मदद से 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। मिलिंद चौहान ने खाता नहीं खोला, पहली गेंद पर वो आउट हुए और उसके बाद पुनीत दीक्षित एक आसान सा कैच दिया उन्होंने किरण तलड़कर के हाथों में और 7 रन वो बना रहे थे। 9 गेंदों का सामना किया था, एक चौका उनके खाते में शामिल था, लेकिन कोई बड़ी पारी आज ना ही मिलिंद चौहान खेल पाए और ना ही पुनीत दीक्षित खेल पाए हैं। लेकिन यश कलसनवर बड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। रोहित पोरवाल इस वक्त मैदान पर डटे हैं, एक अनुभव है उनके पास और अब इस अनुभव का वो फ़ायदा किस तरीके से उठाते हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए, ये रोचक बात बनी रहेगी इस मैच में। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन हमें नज़र आता हुआ। दर्शन मयकर को लाया जा रहा है दूर वाले छोर से, गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए सामने खड़े हैं रोहित पोरवाल। फ्लाइटेड गेंद थी, हवा में उठाकर खेला उस गेंद को ऑन साइड पर और लॉन्ग ऑन के ऊपर जब तक कि गेंद को फील्ड करते रोहित पोरवाल के पास समय था, उन्होंने 1 रन दौड़कर पूरा किया। रोहित पोरवाल जहां पहुंचे 3 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पारी की रन संख्या आगे बढ़ती हुई साई स्पोर्ट्स की 24 रन 2 विकेट खोने के बाद पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। पांचवा ओवर है प्रगति पर इस वक्त दर्शन मयकर का और दर्शन मयकर अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज यश कलसनवर के लिए। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, कट किया उस गेंद को, लेकिन रन नहीं मिलेगा। उस पॉइंट के इलाके में, बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में रोहित देसाई तैनात हैं, उन्होंने गेंद को रोका, थोड़ी नीचे रहकर आई गेंद, कोई रन नहीं बना। फ्लाइटेड गेंद हाफ वॉली बनाकर उठा दिया, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से गेंद गई है 4 रन के लिए। जूसी गेंद डाल रहे थे, एक जूसी फ्लाइट दे रहे थे गेंद को और एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेने में कामयाब हुए। बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया और ये सुनिश्चित किया कि वो गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाए और ये चौका दंदनाता बना रहे हैं यश कलसनवर। इस दंदनाते हुए चौके के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 28, 2 विकेट के नुकसान पर। 28 for 2 साई स्पोर्ट्स। फिर एक बार मई करके गेंद, एक और फ्लाइटेड गेंद, एक और ड्राइव, एक और चौका। खराब गेंदबाजी का नमूना यहां पर देखने को मिलता हुआ। जूसी फुल टॉस डाल रहे थे दर्शन मयकर और इस गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में से निकाल दिया। कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है उस स्वीपर कवर के इलाके में। एक और चौका बना रहे हैं यश कलसनवर। इस चौके के मदद से अब रन संख्या साई स्पोर्ट्स की आगे बढ़ रही है 32, 2 विकेट खोने के बाद। इन 2 चौकों की मदद से अब 16 रन पर जा पहुंचे यश कलसनवर। अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं यश कलसनवर। इस पूरी श्रृंखला में उनका बल्ला अच्छी तरीके से चला ज़रूर है, पिछले टूर्नामेंट में भी उन्होंने अच्छी छाप छोड़ी थी और उसी फॉर्म को वो बरकरार रख रहे हैं इस टूर्नामेंट में भी। अच्छी गेंद डाल रहे थे इस बार और इस अच्छी गेंद के ऊपर रक्षात्मक स्ट्रोक खेलना पसंद किया यश कलसनवर ने। सीधी बॉलर की दिशा में गेंद आ रही थी, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाकर वापस चल दिया अपने बॉलिंग मार्ग पर दर्शन मयकर। शॉर्ट गेंद डाल रहे थे मयकर, कट किया, लेकिन रोहित देसाई के पास गेंद जा रही है। पॉइंट के इलाके में उन्होंने गेंद को रोका और रन की कोई गुंजाइश नहीं है और ये ओवर समाप्त हो रहा है दर्शन मयकर का। थोड़ा सा महंगा और खर्चीला ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर इस ओवर में 9 रन आए हैं और 32 रन बने हैं 5 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर साई स्पोर्ट्स।
वर्तमान श्रृंखला के.आर. शेट्टी मेमोरियल टूर्नामेंट खेला जा रहा है जिमखाना के मैदान पर और इसका सीधा प्रसारण आप आईटीसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। क्रिक हीरोज़ पर आप स्कोरिंग देख सकते हैं लाइव और इसके अलावा सीधे आंखों देखा हाल आपको अगर सुनना है तो आप जिमखाने के मैदान पर आइए, आपको आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा आयोजन किया है के.आर. शेट्टी फाउंडेशन की टीम ने और इस दूसरे पर्व में लीग मैचेस चलते हुए के.आर. शेट्टी मेमोरियल टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। लंबा सफ़र सबको तय करना है। टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ 27 तारीख को, सिर्फ 4 ही दिन, 5वां दिन है आज के दिन कुल मिलाकर और बहुत सारे लीग मैचेस और आने के बाकी हैं। कह नहीं सकते कि कौन आएगा उस क्वालिफायर एलिमिनेटर के दौर में, क्योंकि ये सफ़र पूरा होना चाहिए लीग का। राहुल वेर्णेकर के पास गेंद है। हो ये समस्या चल रही है राहुल वेर्णेकर के साथ। एक और वाइड गेंद करा रहे हैं। लेग स्टंप के बहुत बाहर गेंद को डाला। शिवम ने गेंद को गैदर किया लेकिन मंसूर बड़े भाई का इशारा वाइड गेंद का, तो दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं राहुल वेर्णेकर। लगातार वो वाइड गेंदें करा रहे हैं। पिछले ओवर में भी उन्होंने अच्छी खासी वाइड गेंदें की हैं। 5 रन आए थे। इस बार ये है अच्छी लाइन, ये है अच्छी लेंथ और ये है अच्छी गेंद। राहुल वेर्णेकर ने अच्छा टप्पा पकड़कर इस गेंद को डाला और टप्पा पड़ने के बाद, सीम पर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी स्विंग होकर निकल गई और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश रोहित पोरवाल कर रहे थे लेकिन बुरी तरीके से गेंद ने उनको छकाया है। शिवम नेसरीकर ने गेंद को गैदर किया है बिना किसी रन के और वापस चले अपने बॉलिंग मार्ग पर राहुल वेर्णेकर। उठा दिया हवा में गेंद, मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं है। गेंद जाएगी डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। छक्का, ये स्लॉग स्वीप का छक्का था और क्या टाइमिंग बना रहे थे। और राहुल वेर्णेकर की जो गेंदें तेज आती है उस गति का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को डाल रहे थे, थोड़ी स्लॉट में गेंद डाल रहे थे और जैसे पाले में गेंद मिली इस गेंद को उन्होंने उठा दिया मिड विकेट के इलाके में और रोहित पोरवाल के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का स्कोर को आगे बढ़ा रहा है 39 पर। 39 for 2। रोहित पोरवाल इस छक्के की मदद से जा पहुंचे 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर और 2 चौके 1 छक्का बनाकर 16 रन यश कल्सन अवर के खाते में जा रहे हैं। 2 विकेट भले ही खोए हों साई स्पोर्ट्स की टीम ने, लेकिन रनों की रफ्तार ठीक ठाक रखने में कामयाब हुई हैं और पावर प्ले का सिलसिला जो जारी है उसमें अच्छे खासे रन बना रही है साई स्पोर्ट्स की टीम। फिलहाल तो उनका स्कोर बना है 39-39। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदों का खेल होना बाकी। बैकफुट पर गए, पंच किया उस गेंद को लेकिन रन नहीं मिलेगा। उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद जा रही है। ऋतुराज भाटे ने गेंद को रोका, रन की तमाम संभावनाओं को खत्म किया और गेंद वापस लौट रही है राहुल वेर्णेकर के पास। अच्छी वापसी मैं कहूँगा। छक्का खाने के बाद 1 डॉट गेंद करा रहे हैं रोहित पोरवाल को। ओहो, एक और खराब गेंद डाल रहे हैं लेग स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा होता हुआ राहुल वेर्णेकर थोड़े से परेशानी में चल रहे हैं क्योंकि लगातार वाइड गेंदों का सिलसिला वो जारी करते हुए पिछले ओवर में भी और इस ओवर में भी वही दोहरा रहे हैं गलतियां जो T20 के फॉर्मेट में बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40, 2 विकेट के नुकसान पर 40 for 2। राहुल वेर्णेकर थोड़े से निराश जरूर हैं उस वाइड को लेकर। वो बोल्ड करने में कामयाब। खराब गेंद डाली, पिछली वाइड बनी लेकिन इस बार उन्होंने यॉर्कर गेंद डाल रहे थे
और थोड़े से स्टंप्स के ऊपर आकर खेल नहीं रहे थे रोहित पुरवाल, थोड़ी सी जगह बना रहे थे अपने लिए उस गेंद को खेलने के लिए, खुद ब खुद गेंद को यॉर्कर बनाकर खेलने की कोशिश में रोहित पुरवाल का विकेट अब खो रही है साई स्पोर्ट्स की टीम। राहुल वेर्नेकर भले ही थोड़े से खर्चीले साबित हुए हों इस ओवर में, लगातार वाइड गेंदें उनको परेशानी में डाल रहे थे, लेकिन ये थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि एक विकेट अब उनके खाते में जा रहा है, वो भी रोहित पुरवाल का। और रोहित पुरवाल आउट होने से पहले वो 9 रन बना रहे थे, 10 गेंदों का सामना किया, एक छक्का उनके खाते में शामिल। और अब साई स्पोर्ट्स का स्कोर बना है 40 रन 3 विकेट खोने के बाद। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, कप्तान पार्थ पाटिल मैदान पर आए हैं यश कलसनवर का साथ निभाने के लिए। अब पार्थ पाटिल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। यश कलसनवर फिलहाल तो ठीक ठाक उनकी बल्लेबाजी चल रही है, नाबाद 16 रन बनाकर वो एक छोर पर खड़े हैं। अब पार्थ पाटिल जो कि टीम के कप्तान हैं, आज एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको खेल को आगे बढ़ाना है, अच्छा खासा स्कोर बनाना है क्योंकि मार्क राइजिंग स्टार्स के तरफ अच्छी बल्लेबाजों की फौज मौजूद है। रोहित देसाई, राहुल वेर्नेकर हैं, इसके अलावा भाटे अच्छी गेंद बल्लेबाजी कर सकते हैं, विठल हबीब जैसे बल्लेबाज हैं, इसके अलावा नीलेश पाटिल हैं, ये सभी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजों की फौज मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जाकर साई स्पोर्ट्स की टीम एक तगड़ा स्कोर बनाने की ज़रूर कोशिश करेगी। फिलहाल तो 3 विकेट खोने के बाद 40 रन है उनका स्कोर, छठा ओवर चलता हुआ। अच्छी गेंद नीचे रहकर आई, लेकिन बैटफील्ड कम करते हुए बल्ला नीचे लाकर स्क्वायर ऑफ मिड विकेट के इलाके में उस गेंद को कलाई के सहारे मोड़ दिया। और जब तक कि वहाँ पर गेंद को फील्ड करते 1 रन का इजाफा होता हुआ पार्थ पाटिल ने अपना खाता खोला। आते ही उन्होंने स्कोरिंग का सिलसिला जारी किया और पारी की रन संख्या साई स्पोर्ट्स 41 रन 3 विकेट खोने के बाद। 3 अच्छे बल्लेबाज लौटे हैं पवेलियन में, कोई दुहेरे अंक में प्रवेश नहीं कर सका, ना मिलिंद चौहान, ना रोहित पुरवाल और ना ही पुनीत दीक्षित। यश कलसनवर 16 रन बनाकर वो खेल रहे हैं, 2 चौके, 1 छक्का उनके खाते में शामिल और 1 रन बनाकर पार्थ पाटिल। राहुल वेर्नेकर की अगली गेंद, और अच्छी गेंद, लंबाई भरी गेंद को खेला है, 1 रन के लिए चल पड़े, सटीक निशाना मिड ऑफ के खिलाड़ी लगा रहे हैं स्टंप्स के ऊपर, लेकिन बहुत तेज दौड़ कर आए, वो जानते थे कि खतरनाक होगा उनके लिए, इसीलिए उन्होंने रफ्तार बढ़ाई, उसेन बोल्ट की तरह वो भागे, लंबे लंबे डग भरे और अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं यश कलसनवर। तो 1 रन के साथ ये कामयाब ओवर समाप्त हुआ। थोड़े रन जरूर आए इस ओवर में उस वाइड को लेकर, लेकिन एक बड़ा विकेट भी उनको मिलता हुआ। तो पावर प्ले का सिलसिला खत्म हुआ। 6 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद साई स्पोर्ट्स की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है और 42 रन वो बना रही है 3 विकेट खोकर। यश कलसनवर 17, पार्थ पाटिल 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। और जहां तक विकेट लेने का सवाल है, किरण तर्लेकर 2 विकेट हासिल कर रहे हैं और 1 विकेट राहुल वेर्नेकर को मिलता हुआ। अब देखें कौन आ रहा है गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। दर्शन महेकर के पास गेंद है, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे दर्शन महेकर, 9 रन दे रहे थे दर्शन महेकर, लेकिन कप्तान के रवि पिल्ले उन पर अभी भी भरोसा जता रहे हैं। एक युवा खिलाड़ी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली है उन्होंने, क्योंकि बड़े विस्फोटक तरीके के बल्लेबाज हैं उनके सामने। पार्थ पाटिल भी ज़रूरत पड़ने पर बड़े विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो इक्के दुक्के से भी काम चलाते हैं। तो एक छोर पर वही यश कलसनवर भी कर सकते हैं जो पार्थ पाटिल कर सकते हैं। फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज यश कलसनवर सामना करेंगे दर्शन महेकर का, जिनको 2 चौके पिछले ओवर में लगाने में कामयाब हुए थे यश कलसनवर। फिलहाल छठे ओवर का खेल समाप्त होने तक 42 रन बना रही है और 42 रन बनाते बनाते 3 विकेट खो रही है।
कुछ समस्याओं का समाधान कर रहे थे अंपायर्स, और उस समस्या का समाधान होने के बाद अब खेल जारी होता हुआ। दर्शन माइकर के पास गेंद है और दर्शन माइकर अब गेंदबाजी करेंगे राउंड विकेट यश कार्लसन नंबर के लिए।
6 ओवर के बाद 42। दर्शन मायकर दूर वाले छोर से नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यश कलसनवर उनके सामने खड़े हैं। वो अच्छी गेंद डाल रहे थे, हल्के से कलाई का उपयोग करते हुए फ्लिक किया उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में। डीप में से फील्डर बहुत तेज आए, खुद कप्तान रवि पिल्ले हैं उस इलाके में, बहुत तेज दौड़ कर आए उस गेंद के ऊपर। उन्होंने गेंद को रोका, थ्रो किया, लेकिन 1 रन का इजाफा कलसनवर के खाते में होता हुआ यश कलसनवर जा पहुंचे अब 17 के व्यक्तिगत स्कोर पर और साई स्पोर्ट्स की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 43, 3 विकेट के नुकसान पर 43 for 3। दाएं बाई की जोड़ी मैदान पर थोड़ी समस्या जरूर रहेगी गेंदबाजों के लिए। लाइन लेंथ बरकरार रखनी होगी दाएं बाएं बल्लेबाजों के लिए। इस गेंद को कुछ थर्ड मैन के तरफ स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे पार्थ पाटिल, बैकफुट पर जाकर थोड़ी सी जगह बना रहे थे वो, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रहकर आई, बल्ले से लगी, पैड पर लगी, वहीं पर लुढ़क कर रह गई। शिवम नेसरीकर ने गेंद को उठाकर वापस कर दिया है दर्शन मायकर को। क्या बढ़िया गेंद डाल रहे थे, एक गुड लाइन पर टप्पा खिला रहे हैं और एक कदम आगे बढ़ाकर डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने के लिए चले गए पार्थ पाटिल, लेकिन गेंद ने उनको बुरी तरीके से बीट किया, कोई रन नहीं बना। इस गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड ऑन के इलाके में खेला और मिड ऑन पर लॉन्ग ऑन से फील्डर ने आकर गेंद को उठाया है, लेकिन तब तक 1 रन का इजाफा होता हुआ पार्थ पाटिल के खाते में। पार्थ पाटिल जहां पहुंचे 2 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पारी की रन संख्या अब बनी है साई स्पोर्ट्स की 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 44 for 3। पारी का 7वां ओवर चलता हुआ। शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, बैकफुट पर जाकर हल्के से इस गेंद को फिर एक बार मिड विकेट के इलाके में खेला है। फिर एक बार रवि पिल्ले हरकत में आ रहे हैं और साफ सुथरी फील्डिंग के चलते उन्होंने गेंद को रोक कर थ्रो किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पा रहे हैं कलसनवर को। कलसनवर जा पहुंचे अब 18 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पारी की रन संख्या बनी है साई स्पोर्ट्स 45, 45 for 3। थोड़ी शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला पार्थ पाटिल ने और डीप में जब तक कि गेंद को फील्ड करते 1 रन का इजाफा होने के बाद अब रन संख्या बनी है 46। 7 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद साई स्पोर्ट्स 46 रन बना रही है 3 विकेट के नुकसान पर। कलसनवर खेल रहे हैं 19 रन बनाकर और पार्थ पाटिल खेल रहे हैं 3 रन बनाकर। अब देखना ही होगा गेंदबाजी करने के लिए कौन आ रहा है और रोहित देसाई आ रहे हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। ये उनके कोटे का पहला ओवर रहेगा, पारी का वो 8वां ओवर जारी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनके सामने खड़े हैं बैट्समैन पार्थ पाटिल जो कि कप्तान है टीम के। 3 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर रहा है, तो 19 रन बनाकर यश कलसनवर खेल रहे हैं और रन संख्या बनी है 7 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 46 रन साई स्पोर्ट्स 3 विकेट खोने के बाद। क्या फील्डिंग लगाई गई है देखेंगे पार्थ पाटिल के लिए। विकेट कीपर के अलावा एक थर्ड मैन है, एक पॉइंट पर खिलाड़ी हैं, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर फाइन लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। तो ऑन साइड पर आपको घेरे के अंदर 30 गज दायरे के अंदर एक ही खिलाड़ी नजर आएगा उस शॉर्ट फाइन लेग के दिशा में, बाकी के 3 खिलाड़ी जो हैं वो है बाउंड्री के ऊपर। बैकफुट पर गए, इस गेंद को ऑन ड्राइव खेला है पार्थ पाटिल ने, लॉन्ग ऑन के इलाके में गेंद है और लॉन्ग ऑन पर हबीब जब तक की गेंद को फील्ड करते पार्थ पाटिल ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। अब पार्थ पाटिल जा पहुंचे 4 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पारी की रन संख्या 47, 47, 3 विकेट खोने के बाद साई स्पोर्ट्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अब तक 47 रन जोड़ रही है 3 विकेट खोने के बाद। यश कलसन नंबर 19 पर खेल रहे हैं, अब सामना करेंगे रोहित देसाई का। ओह
इस गेंद को हाफ वॉली बनाकर ड्राइव किया, उस एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। हबीब हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर, उन्होंने आकर गेंद को रोका है, लेकिन तब तक यश कलसनवर ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। 21 पर जा पहुंचे यश कलसनवर, और ये शॉर्ट रन का इशारा किया जा रहा है अंपायर मंसूर बड़े भाई की तरफ से। तो खाते में तो एक ही रन आएगा, शायद वो बल्ला घसीट कर नहीं लेकर गए हैं उस पॉपिंग क्रीज के अंदर कलसनवर, इसलिए एक शॉर्ट रन। हो धीमी गेंद डाल रहे थे, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद भी डाल रहे थे, तो वाइड का इशारा हो रहा है इस वक्त। और इस वाइड के चलते अब स्कोर बना है 48। एक और वाइड, राउंड द विकेट। ये गेंद थोड़ी तेज डाल रहे थे, हल्के से इस गेंद को धकेला है कलसनवर ने। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, लेकिन दूसरे की गुंजाइश नहीं है। उनके दर्शन मयकर बड़े चपल खिलाड़ी हैं, और वो डीप मिड विकेट बाउंड्री से आए हैं। उस 30 गज दायरे के अंदर उन्होंने गेंद को रोका, 1 रन बना। बैकफुट पर गए, बल्ले का मुंह खोल कर खेला, पॉइंट पर खराब फील्डिंग हो रही है पॉइंट पर फील्डर द्वारा, और पॉइंट पर गेंद ठीक तरीके से फील्ड नहीं कर पा रहे हैं नीलेश पाटिल। और ये देखिए थोड़ा आलसी किस्म का क्रिकेट हम देख रहे हैं मार्ग राइजिंग स्टार्स के तरफ से, और इसका फ़ायदा उठाने में कामयाब हुए हैं यश कलसनवर। दूसरा भी रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। रन संख्या बनी है 54। ओहो, ये रन आउट करने का प्रयास कर रहे थे रोहित देसाई। ओ, बड़े भाई बचे हैं निश्चित तौर पर। बड़े भाई के साथ ये समस्या हमेशा बनी रहती है, एक बार कम से कम गेंद उनके आसपास से निकलती है। ये तो बहुत करारा शॉट था, और उनको लेटना ही पड़ा मैदान पर, क्योंकि इतना सीधा सटीक ड्राइव किया था। और कहीं ना कहीं जाकर रोहित देसाई अब तकलीफ में हैं। मंसूर बड़े भाई बहुत जल्दी रिफ्लेक्सेस दिखाए उन्होंने, वो जानते थे कि अगर वो लेटेंगे नहीं तो गेंद उनको आकर लगेगी, ये निश्चित था। लेकिन बड़े भाई के कपड़े अब गंदे हो चुके हैं, मिट्टी लग चुकी है उनको, लेकिन बचे हैं बाल बाल निश्चित। छप्पन रन स्कोर बनता हुआ 54, 3 विकेट के नुकसान पर। क्या करारा ड्राइव था, सीधा ड्राइव था। बड़े भाई को चौकन्ना रहना चाहिए जब भी कभी वो हम्परिंग करते हैं, चाहे वो स्क्वायर लेग पर हो या इस तरफ हो। गेंद कभी ना कभी उनका पीछा करती है, पता नहीं क्या है। धीमी गेंद डाल रहे थे, इस धीमी गेंद के ऊपर आकर खेला, 1 रन बनेगा। वाइड स्लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, बहुत अच्छी फील्डिंग की, बहुत तेज़ है किरण तर्लेकर, और किरण तर्लेकर ने गेंद को रोक कर थ्रो किया। 1 ही रन बनने के बाद अब रन संख्या बनी है 55, 55। ओवर समाप्त होता हुआ रोहित देसाई का। तो अब ओवर समाप्त हुए हैं 8, और 8 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 55, 3 विकेट के नुकसान पर, 55 for 3।
अब देखेंगे कौन आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए। जी नहीं, दर्शन मयकर ही लगते हैं। जी हाँ, दर्शन मयकर। अब तक दर्शन मयकर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडन नहीं रहा उनका। 13 रन दिए हैं, कोई विकेट तो नहीं मिला उनको, लेकिन अब मोर्चे पर लगे दर्शन मयकर सामना करेंगे यश कलसन्नवर खेल रहे हैं 22 रन बनाकर। पार्थ पाटिल कप्तान उनका साथ निभा रहे हैं 7 रन बनाकर। और अब 8 ओवर के बाद 55। अच्छी गेंद, अच्छी फ्लाइटेड गेंद सीध में डाल रहे थे और कोई हाथ खोलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं दर्शन मयकर। यश कलसन्नवर को सीधी गेंद बॉलर की दिशा में खेला, कोई रन नहीं बना। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, कट किया उस गेंद को। अच्छी फील्डिंग नीलेश पाटिल की उस फ्लाइंग गली के इलाके में वो कर रहे हैं, लेकिन मौका बना 1 रन का और इस 1 रन की मदद से रन संख्या अब बनी है अब तक 56, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर द विकेट दर्शन मयकर गेंदबाजी करेंगे पार्थ पाटिल के लिए। बैकफुट पर गए, पंच किया उस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद जा रही है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी भाग रहे हैं, पैरों का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को रोकने का प्रयास कामयाब नहीं हुआ और ये चौका बनता हुआ। रवि पिल्ले उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खड़े हैं, उस गेंद को वो रोक नहीं पा रहे थे और गेंद जैसे ही वहाँ से निकली बहुत तेज़ निकल गई। कोशिश की लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, थोड़े से जो वाइड खड़े हैं खिलाड़ी, उन्होंने कोशिश की, अपने दिमाग के घोड़े तो ज़रूर दौड़ा रहे थे उस पैरों का सहारा लेकर, लेकिन रोक नहीं पाए। इस चौका बनने के बाद रन संख्या बनी है 60। और हाफ वॉली बनाकर ड्राइव किया उस गेंद को लॉन्ग ऑफ के इलाके में, सर पटाते हुए गेंद को फील्डर ने रोका, लेकिन 1 रन बनता हुआ पार्थ पाटिल के खाते में। इस 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 61 रन, 61, 3 विकेट के नुकसान पर साई स्पोर्ट्स। ये अच्छी भागीदारी इस वक्त 4थे विकेट के लिए चल रही है साई स्पोर्ट्स के लिए। स्टीयर किया इस गेंद को, नीलेश पाटिल खड़े हैं थर्ड मैन के इलाके में। 30 गज दायरे के अंदर उन्होंने गेंद को रोका जरूर है, लेकिन स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े यश कलसन्नवर और 1 रन अपने खाते में हासिल किया। अब इस 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 62 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 62 for 3 साई स्पोर्ट्स। पारी का 9वां ओवर चलता हुआ दर्शन मयकर का। ओ इनसाइड आउट खेला इस गेंद को, उस डीप कवर के इलाके में गेंद गई है। केदार उसुलकर ने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पा रहे हैं पार्थ पाटिल को। इस 1 रन की मदद से दर्शन मयकर का ओवर अब समाप्त हुआ है, तो कुल मिलाकर 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 9 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद साई स्पोर्ट्स की टीम 63 रन बना रही है 3 विकेट के नुकसान पर। DJ Ashish Mix. नेहरू की शुरुआत रोहित देसाई की और ये चौका बनता हुआ उस वाइड लॉन्ग ऑन के इलाके में। केदार उसुलकर ने कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, चौका।
रोहित देसाई की गेंद, ओ क्या बढ़िया गेंद डाल रहे थे पार्थ पाटिल जैसे काबिल बैट्समैन को, एक काबिल गेंद डाली है। चौका जरूर खाया था लेकिन थोड़े चौकाने में भी कामयाब हुए हैं पार्थ पाटिल को रोहित देसाई। अच्छी गेंद डाली, गुडलैंड पर टप्पा खिलाया, थोड़ी स्विंग भी लेकर गई। उस आगे बढ़कर डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश में पूरी तरीके से गेंद ने उनको चकमा दिया और गेंद वापस रोहित देसाई के पास। बैकफुट पर गए, इस गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेला, केदार उसूल कर थोड़ी सी मिसफील्डिंग कर रहे हैं डीप में और मौके के ताड़ में है पार्थ पाटिल। जैसे देखा कि पहले प्रयास में गेंद को उठा नहीं रहे हैं केदार उसूल कर, दूसरा भी रन दौड़कर पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से 69 रन बने हैं अब तक 3 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 0 पर खोया, दूसरा 9 पर खोया, तीसरा 40 पर और अब रन संख्या बनी है 69। बैकफुट पर गए, बल्ले का मुंह खोला, पॉइंट की दिशा में खेला, एक बार और थोड़ी सी मिसफील्डिंग का नतीजा दूसरे रन में तब्दील करते हुए आप थोड़ी सी भी गलती करोगे फील्डिंग में, वो चाहे 30 गज दायरे के अंदर हो या फिर 30 गज दायरे के बाहर हो, आप थोड़ी सी भी मिसफील्डिंग करेंगे तो यकीन मानिए जहाँ पर 1 रन बनना चाहिए था वहाँ पर दूसरा रन बनेगा। तो ग्राउंड फील्डिंग किसी भी टीम की हो अच्छी करनी चाहिए। अच्छा मैदान है फील्डिंग करने के लिए और फील्डिंग बड़ी अहम चीज़ है क्रिकेट में, उसके बलबूते पर मैच जीते जा सकते हैं। ओ हवा में खेला जरूर था, इस गेंद को मिड विकेट के इलाके में कलाई का उपयोग करते हुए मोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नीचे तो नहीं रख पाए गेंद को, लेकिन खतरे जैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि उस 30 गज दायरे के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं है मौजूद। डीप में से केदार उसूलकर ने आकर गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा होने के बाद अब रन संख्या आगे बढ़ रही है साई स्पोर्ट्स की 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 32 रनों की भागीदारी फिलहाल चल रही है यश कलसनवर और पार्थ पाटिल के बीच में। राउंड विकेट, इस गेंद को स्टीयर किया है उस गली के इलाके में और जब तक कि नीलेश पाटिल गेंद को फील्ड करते 1 रन अपने खाते में जोड़ा है यश कलसनवर ने और ये 10वें ओवर का खेल समाप्त हुआ है। जलपान का समय घोषित किया है अंपायर ने, तो 7.30 के रफ्तार से 73 रन बना रही है साई स्पोर्ट्स की टीम 10 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। Request and backup. Come up for it.
the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight we gonna let it out. Tonight we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight we gonna let it out. Tonight we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Let me stay
गए और उल्टे कदम जाकर इस कैच को लेने में कामयाब। पार्थ पाटिल, कोच ऋतुराज भाटे, रोहित देसाई वापस लौटे हैं पवेलियन में। तो 45 रनों की भागीदारी जो चल रही थी अंततः वो समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। तो जलपान के बाद अब विकेट हो रही है स्पोर्ट्स की टीम। अब इससे पहले कि नए बल्लेबाज आए मैदान पर, आगे का विवरण देने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर चेतन भेजू। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। Rohit Desai there once again to the batsman Vinod Devadiga. But every time Rohit Desai trying to do that and the batsman is well foot grounded there. Now that everybody knows that these days Rohit Desai does that. Since the batsmen are in a hurry to go to the other end, no damage done. Watchfully played off the front foot, caught on the crease there. A gentle push towards the gully region for a dot ball. With that dot ball, score stands at 86 after the completion of 12 overs. 12 overs have been bowled and the scorecard reading 86. Yash Kalsanavar is batting on 35. The last man to go back was Parth Patel, who got 25 runs of 20 deliveries. He was looking good and dangerous, trying to hit it over long off. Was caught on extra cover by Ruturaj Bhate. Four wickets down, the scorecard reads 86 for the loss of 4 wickets at the completion of 12 overs. Well, it is Zenith. I think Zenith Mudbagil comes onto the crease to ball his bowling quotas.
Played it up especially towards wideish of mid-wicket on the couple of bounces. The fielder comes in and fields. Good fielding there to keep the batsman to a single. It is Ravi Pillai, the captain at wideish mid-wicket, as the ball was played loftedly. Another single for the taking. With that single, the scorecard moves to 87 now. Good ball there, beaten all, ends up beating the batsman and into the hands of the wicketkeeper for a dot ball. Again going onto the back foot and trying to cut him there. Beaten all, ends up into the hands of the keeper, up to the stumps for a dot ball. Good take there by Shubham Nesrekar. He's doing the wicket keeping job today for his team. And trying to drive him, drive it towards the sweeper cover region for a single as the batsman crossover. With that single, the scorecard for the limps along to 88 for the loss of 4 wickets. Going over the back foot and again driving it off his back foot there towards long on, all along the carpet for a single as the batsman crossover. Yash Kalsanavar, the batsman there, left-handed. With that single taken, the scorecard further ticks along to 89 for the loss of 4 wickets. That gets Vinod Devadiga on strike to face Zenith Mudbagil. Played it up especially in the extra cover region there. A boundary to take for the batting side. What a shot that is. Especially driven in the extra cover region for a boundary. With that boundary, the scorecard moves to 93 runs and also completes the over. 13 overs have been bowled and the scorecard reading 93 for the loss of 4 wickets. Those 4 wickets to go down was of Milind Chavan got a duck for himself of the first delivery that he played. Rohit Parwal got 9 runs of the 10 deliveries that he played. Punit Dixit got 7 runs of the 9 deliveries that he faced. And Parth Patil, the last man to be dismissed, was caught by Ruturaj Bhate at short cover, extra cover in fact, of the bowling of Rohit. Parth Patil got 25 runs of the 20 deliveries. Yash Kalsanavar is batting on 37 runs and Vinod Devadiga is batting on 5 runs. Off the back foot there, played it up, Pishli cries of catch it and made it look so simple in the end. Darshan Maikar, the fielder there at mid wicket, throwing his wicket away there. Yash Kalsanavar had done so good to get 37 for himself and the team at the fall of Yash Kalsanavar's wicket, who got a magnificent 37. He threw his wicket away trying to play it up pitchly towards the wideish mid wicket. Good catch there by the batsman, by the fielder Darshan Mayekar there. And 5th wicket goes down begging for Sai Sports in the form of Yash Kalsanavar. Yes, Kalsanavar got a magnificent 37 runs before walking back to the dugout there. And at the fall of Yash Kalsanavar, let me tell you, it is Rahul Naik. Rahul Naik coming out of the crease there. Another big fish in this side today. Rahul Naik, a big name and a big fish in Sai Sports. 5 wickets down and they have got the depth in batting, Sai Sports. And Rahul Naik walks onto the crease to join his
fellow mate Vinod Devadiga. Both two batsmen, Vinod Devadiga and Rahul Naik, have a job on hand to do to build up an innings and partnership for themselves and the team. Fifth wicket goes down in the form of Yash Kaushanover, got 37 runs at a score of 93 runs. Well, as the batsman crossed over, it is Vinod Devadiga to face Rohit Desai from the commentary box end. So good, Rohit Desai picks up one more wicket for himself and the team. Fifth wicket goes down. Half of the side is back in the dugout. Played it upishly right over the bowler in front of the commentary box for a boundary there. What a shot that is at the bat of Vinod Devadiga. Pitched up delivery by the bowler to the batsman Vinod Devadiga. And 4 more for the taking. What a straight drive that was. Going to the pitch of the ball and driving it upishly towards long off. Kiran Tarlekar, the fielder there, but just a spectator. Good shot there by Vinod Devadiga. Going to the pitch of the ball and driving it towards off. Long off for a boundary. A slower one there. Waited for the ball to come. Rahul Vernegar, the fielder there in point region, comes in quickly to field. No, says Rahul Naik, was not interested in the run. Vinod Devadiga thought of taking a run there. Importantly, a dot ball. With that dot ball, score still stands at 97 runs for the loss of 5 wickets. Once again, Rohit Desai to ball to Vinod Devadiga. Again, the slower one coming at the back of the hand, played it upishly towards long off. Kiran Tarlekar comes in and fields. The batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard limps along to 98. That gets Rahul Naik on strike to face Rohit Desai. Let me tell you one thing, Rohit Desai and Rahul Naik played plenty of cricket against each other and with each other. Today, one more time, they are facing and playing against each other. Rahul Naik to face Rohit Desai. Flicked of his pads there towards mid wicket. The fielder coming in. Kedar Usulkar comes in and fields. The batsman cross for the single. With that single, Rahul Naik opens his account and takes the scorecard, ticking along to 99. 99 for the loss of 5 wickets. Rohit Desai to the batsman Vinod Devadiga. Again, a slower one, then played off his pads towards mid wicket. The fielder comes in, Kedar Usulkar, and fields. One for the taking, and 100 comes up for Sai Sports. Good 100 runs for the loss of 5 wickets. 100 up. And with that, it also completes the over. The last delivery was taken for a single, and with that single, the over has been completed. So after the completion of 14 overs, scorecard reading 100 runs for the loss of 5 wickets. Rohit Desai has bowled 4 overs, given away 29 runs, picked up 2 wickets. And Darshan Maikar has bowled 4 overs, given away 31 runs with no wickets for himself. So both these bowlers have finished their bowling quota of 4 overs. Darshan Maikar has bowled 4 overs, given away 31 runs with no wickets, and Rohit Desai has bowled 4 overs, given away 29 runs and picked up 2 important wickets for himself and the team. So 14 overs have been bowled and the scorecard reading 100 runs there for the loss of 5 wickets. Devadiga on strike to face the bowler Zenith Murdagil. Waited for the ball there, wanting to play onto the onside. The ball turning after pitching the deck there, taking the edge of the bat, maybe going towards shot third man. Rohit Desai, the fielder there. The batsman crossover for a single. With that single, the scorecard moves to 101 now.
Rahul Naik, full pitch delivery. They dug out from the block hole. Rahul Naik played with soft hands towards long off there. In fact, good bowling, over pitched delivery into the block hole to Rahul Naik. Rahul Naik quickly getting the bat down there and digging it out of the block hole and playing it towards long off for a single as the batsman cross over and the scorecard moves to 102 runs. That gets Devadiga on strike. Vinod Devadiga to face Zenith Mudbagil. Played it up in the cries of catch it and the catch goes begging there. Ruturaj Bhate there, the fielder, made it look so simple in the end. Vinod Devadiga not happy with himself, trying to play that lofted drive scooped up in the air straight to the fielder at extra cover. Ruturaj Bhate, a wicket he's thrown away the wicket of himself. The sixth wicket goes down begging for Sai Sports in the form of Vinod Devadiga, but they've got plenty of depth left in the batting. The chocolate boy Rajendra Danganavar comes into the act. Rajendra Danganavar comes into the act with his batting to the crease as he would be taking strike. Sixth wicket goes down in the form of Vinod Devadiga. Managed to get 11 runs, 12 runs of the 11 deliveries with 2 boundaries. Good 12 runs he got, Vinod Devadiga. Another good batsman throwing his wicket away. In fact, he could have played it all along the ground, scooped it up in the air towards extra cover. And Ruturaj Bhate took a good catch there. Good catch by Ruturaj Bhate at the extra cover region. Diving forward, the ball was dipping onto Ruturaj Bhate. Made it look so simple in the end. And a good catch by Ruturaj Bhate. This kind of fielding and catch will definitely increase the morale. Will boost the morale of the fielding side. Marg Rising Stars. They picked up 6 wickets at the score of 102 and 6 wickets are down already. So 2 men have the job on hand to do for Sai Sports. That is Raj Danganavar and Rahul Naik. This time a thick is there to the shut-third man, Nilesh Patil, trying to move to his left. He did see the ball coming straight to him. He slowed down a bit from where he was fielding. And meanwhile, the batsman crossed over for a single. With that single taken, the scorecard for the ticks along to 103 for the loss of 6 wickets. That gets Rahul Naik on strike to face Zenith Mudbagil. Short of length there, and you really can't set a field for this kind of ball. You really can't set a field there. Good shot there. Bound signal by umpire Sanjay. 4 more for the taking. With that, 4 runs, the scorecard ticks along to 107. This time trying to cut him, going onto the back foot, into the hands of the keeper there. Good bowling there by Zenith Mudbagil. Straight to the wicket keeper. Batsman Rahul Naik, a tall man, trying to cut him. Beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. With that dot ball, score stands at 107 for the loss of 6 wickets after the completion of 15 overs.
Vital Habib there, ball into the batsman Rajendra Danganavar. Rajendra Danganavar cutting it to the point area. As the batsman crosses out for a single, the scorecard further ticks along to 108 runs. Vital Habib to the batsman Rahul Naik. Rahul Naik straight to the bowler himself in his follow through there. Maybe outside chance of a catch. Maybe the ball just hitting the bowler and taking the pace of the ball there. Very difficult to take these kind of catches there, but one more for the taking as the ball goes towards long on, and Kiran Tarlekar, the fielder there, with that single, the batsman to settle down. The scorecard moves to 109. Trying to cut it, steer it, or maybe play it towards third man. Beaten all ends up. Raj Danganavar into the hands of the keeper for a dot ball. Once again, this time Raj Danganavar, the ball slightly keeping lower than anticipated, wanting to play it into the hands of the keeper for a dot ball. Played with soft hands again, steering the pace of the ball towards short third man. Rohit Desai comes in and fields the batsman crossover and the single. With that single, the scorecard moves to 110. That gets Rahul Naik on strike to face Vital Habib. A cross-batted shot there, driving it towards. Oh, fumble there. The ball been fielded by some football skills by the fielder Rohit Desai. One more taking in the form of a single, and it also completes the over. So after the completion of 16 overs, the scorecard reading 111, 111 for the loss of 6 after the completion of 16 overs. Zenith Mudbagil to the field batsman Rahul Naik. Rahul Naik trying to hit a big one. Thick as there. Nilesh Patil misses it completely at the shut third man region. Taking the lower edge of the bat and the ball rolling on towards the third man. Really can't set a field for this kind of cut there. The lower edge of the bat and the ball rolling on. You can call it a Chinese cut or lemon cut, whatever they call these days. Nevertheless, 4 more for the taking. With those 4 runs, scorecard moves along to 115. With that 4, Rahul Naik moves to 12 runs. Again, driven it all along the carpet towards wideish of cover there.
2 runs for the taking, slightly fumbled by the field. I think Ravi Pillai, the captain, there at the cover, and they capitalize on the misfield. 1 more for the taking, 2 more in fact in total. With those 2 runs, the scorecard for the ticks along to 17. Again driven all along the carpet towards the wideish of long on. The batsman crossover for a single, and scorecard moves to 118. Good shot there again, all along the carpet towards the mid wicket, as Rajendra Dangan overplayed it, and also crossed over for a single. With that single, the scorecard further ticks along to 119. Asking for a wide there, but converted into a dot ball. Umpire really not interested, into the hands of the keeper for a dot ball there. Good take by Shubham Nisarkar, standing up to the stumps. Plays it up Pishli Rao like over long off for a huge 6 there. What a shot that is at the bat of Rahul Naik there. With that 6, the scorecard for the ticks along to 125 runs. And with that 6, it also completes the overs after the completion of 17 overs. Scorecard reading 125 for 6. Good shot there by Rahul Naik. Rahul Naik goes to 21 with that shot. Played with soft hands there to kill the record towards the point region. Feeder from deep point comes in and fields. 1 more for the taking. With that 1 run, the scorecard for the ticks along to 126. Oh, good shot. Cries of catch it, and he puts it down there. The fielder being coming under it. I think it is Zenith there. Zenith putting it down there towards wideish of gully at the fence there. He knew that that fielder was set for the catch for the taking, and he put it down. So the 7th wicket goes on begging in the form of Purit Dikshit. Big appeal, umpire really not interested there at all. A dot ball.
Once again, Kiran Tarlekar to the played it upishly. K.R.Shetty coming under it, and good try, but over the line there. 6 over the line, 6 signaled by umpire, and with that 6, the scorecard moves to 133 now. What a shot that was at the bat of Rajendra Danganawar. Full pitch delivery by the bowler Kiran Tarlekar, and did he swing his bat towards a wide-ish off long on for a huge 6. Good shot there by Raj Danganawar. With that 6, Raj moves to 11 runs. Once again, straight back the bowler Kiran, trying to stop it, but good piece of fielding there by K.R.Shetty coming in quickly and fielding to his right, covering a distance of about 20 yards. Good fielding there by K.R.Shetty. 2 more for the taking. With those 2 runs, the scorecard for the takes to 135. Cut him there this time, wide-ish of third man up in the circle, the sweeper cover and point, deep point at the fence. 4 more for the taking. This is expensive over. 1, 6 and 4 coming in this over at the bowling of Kiran Tarlekar. Good batting there by Rajendra Danganawar, standing tall and cutting him towards the deep point and gully region for a boundary. With that boundary, the scorecard for the ticks along to 139 for the loss of 6 wickets. VITHAL Habib comes into the act now. VITHAL Habib comes up with his bowling quota, second over and innings 19th over to the batsman Rahul Naik. 139 the score now. How many more can they add on in 2 overs? Shot of length, and this is the Rahul Naik that we know there, but just in vain. It is K.R.Shetty comes in and takes that beautiful catch there. So the 7th wicket goes down begging in the form of Rahul Naik. Rahul Naik trying to hit a big one down the leg side there, scooped it up in the air. It looked as though it is going to fly past over the square leg boundary, but good catch there by K.R.Shetty. So Rahul Naik walking back to the dugout. At the fall of Rahul Naik's wicket, it is Sushant Kwadkar. Sushant Kwadkar walking onto the crease there, and Rahul Naik got 22 runs of the 13 deliveries that he faced, with 2 boundaries and 1 6. Good 22 runs that he got of 13 deliveries. So Sushant Kwadkar walking onto the crease at the fall of Rahul Naik. Oh, he drops it in the end. Mine, yes, no, there's a big confusion there.
if the ball had to hit one more for the taking, but Sushant not interested now. It's all happening there. Raj Danganavar trying to hit a big one there. And there was a catch for the taking. The wicketkeeper had gone there all the way, saying it's my catch. Three people running around to the catch there. And in the end, the result put down. Vittal Habib also ran in for the catch. Also did Shubham Nesrekar at the field from deep point. Everybody running in onto the back foot and played, punched it towards long on, wanting to. Two is the call, and good running in between the wickets by these two batsmen, by Sushant Kuadkar and Rajendra Danganavar. Good understanding there. Sushant pushed for the second. He knew that there was 2 runs for the taking as the fielder being at the edge of the circle. And the scorecard moves to 143 with those 2 runs. Good running by these two batsmen out there. And slightly sloppy fielding. 143. Played it over the bowler's head. Cross-batted shot towards long off. The fielder comes in and fails. Darshan Mayekar, the fielder there. One of the better fielders in the side. 1 more for the taking. With that single, the scorecard moves to 144 for the loss of 7 wickets. That gets Sushant Kuadkar on strike to face Vittal Habib. Cross-batted shot again, straight to the field, and he makes no mistake. Darshan Mayekar there makes it look so simple and easy in the end. So Sushant Kuadkar goes back without tickling the scorers. The 8th wicket goes down begging in the form of Sushant Kuadkar. Good catch there by Darshan Mayekar at the long on fence. And Sushant Kuadkar has to walk back to the dugout in the form of 8th wicket. So at the fall of 8th wicket, it is Anand Malvi. Anand Malvi comes onto the crease there. Important to see as whether to the batsman crossed or not. The umpires will take a call. Trying to cut him there, but this time umpire calling it a wide. Wide signaled another extra in the form of an wide. The scorecard ticks along to 145. Trying to hit a big one. Up goes the finger. Anand Malvi saying bad nevertheless. Wicket judged. LBW caught in front of the stumps there. So the 9th wicket goes down in the form of Anand Malvi. Vittal Habib picks up that wicket of Anand Malvi there. Aryan Upadhyay coming onto the crease. Aryan Upadhyay will be at the non-striker's end as the wicket was taken. The judge LBW caught in front of the stumps.
Vittal Habib there having the last laugh and smile. Anant Mali trying to explain the same thing. Nevertheless, 9 wickets go down. Again onto the back foot and punched it off his pads towards the mid-wicket area, coming in and quickly fielding. And good fielding and good throw as well by again the fielder Darshan Maikar there. The batsmen have to settle down for a single. With that single, the scorecard ticks along to 146. Well played off his pads there towards mid-wicket, wanting to, but both the batsmen settle down for a single. Fielder coming in quickly from square leg and fielding, just giving away a single. With that single, the scorecard further ticks along to 147 for the loss of 9 wickets. Down the leg side there, and a fumble by the wicketkeeper. This time Shubham Nesrekar there, wide signalled, and 5 wides, and also a boundary there with that wide. So 5 wides for the taking. This is bad bowling by the bowler there. 5 wides, and the scorecard moves to 152. So 150 comes up in the form of a psychological barrier for the Sai Sports. Kiran Tarlekar drifting down the leg side. And wide signal by umpire, 5 for the taking. Trying to hit a big one there if the ball hits directly, nevertheless. Kiran Tarlekar trying to field off his own bowling. By the time he could go and field, the batsman cross over for a single. With that single, the scorecard for the ticks along to 153. Oh, this again beaten there. Not only did the batsman but also the wicketkeeper. The bowler will not be happy there by signal by umpire. One more for the taking in the form of bye. And the scorecard moves to 154. Good shot there, flicked it, and the wicket. Good catch there by the fielder Kedar Usulkar right in front of the commentary box. Made it look so simple in the end. The 10th wicket goes down in the form of Rajendra Danganava trying to play that flick shot, kind of a helicopter shot there also, but straight to the fielder into his throat. So 154, the innings comes to an end. It would be a very interesting contest now when Sai Sports will come out to ball, and Mark Rising Stars need 155 to win this match. So we have a 10 minutes break now, and we'll come back after break. Thank you.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. तो थर्ड मैन, उसके बाद एक गली पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, उस इलाके में फील्डर हैं, पूरा एक घेरा बना के रखा हुआ है और अंपायर ने खेल शुरू होने के संकेत दिए हैं। तो मार्क राइजिंग स्टार्स के लिए चाहिए 155 155 20 ओवर के इस मैच में K.R. शेट्टी मेमोरियल T20 टूर्नामेंट वर्तमान श्रृंखला चल रही है और आज के दिन का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। सुशांत कुवाडकर की पहली गेंद हवाई स्ट्रोक खेला है। दो खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे, पार्थ पाटिल और अनंत मालवी, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश जबरदस्त कर रहे थे उस हवाई स्ट्रोक के लिए, लेकिन कोई ज़्यादा परेशानी का कारण तो नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन बहुत तेज़ दौड़ रहे थे।
अपनी रफ्तार बहुत ज़बरदस्त रखी थी इन दोनों ने, अनंत मालवी हो या फिर पार्थ पाटिल हो। कैच लेने की जी जान तोड़ कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन बाउंड्री रोप के बाहर जाने के बाद उस साइड स्क्रीन की तरफ टकरा गए पार्थ पाटिल। लेकिन ज़्यादा कोई समस्या नहीं है उनके लिए, कोई ज़्यादा परेशानी का कारण तो नहीं है। लेकिन चौका बना रहे हैं रोहित देसाई उस पहली गेंद पर जो वो सामना कर रहे थे सुशांत कोवाडकर का। तो शुरुआत बड़ी धमाकेदार कर रहे हैं, थोड़ी स्लॉट में गेंद डाल रहे थे और थोड़ी स्लॉट में गेंद मिलने के बाद सीधा उठाकर हवा में खेला था। मिड ऑन की तरफ से पार्थ पाटिल भाग रहे थे, मिड ऑफ की तरफ से अनंत मालवी भाग रहे थे। गेंद को तो वो रोक नहीं पाए, लेकिन 4 रनों के साथ खाता खोलने में कामयाब हुए हैं रोहित देसाई। टीम ने भी खाता खोला है, मार्क राइजिंग स्टार्स 4 रन बगैर किसी नुकसान के। तो साइड स्क्रीन के तरफ कोई भी अगर लोग हैं तो थोड़ा सा पीछे जाएं, क्योंकि समस्या है इस वक्त बल्लेबाजों के लिए। थोड़ा साइड स्क्रीन की दिशा भी थोड़ी सी बदलें, उसको थोड़े से हिलाने की ज़रूरत है। सुशांत कोवाडकर की गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे थे। बल्ले के निचले हिस्से से गेंद लगी, थोड़ी गुड लाइन पर टप्पा खिला रहे थे, थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर भी गेंद को डाल रहे थे, लेकिन उस स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश चल रही थी। लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से लगने के बाद गेंद विकेट कीपर ने गैदर की है, कोई रन नहीं बना। वो वापस गेंद आ रही है सुशांत कोवाडकर के पास, अच्छी वापसी। एक चौका खाने के बाद एक डॉट गेंद करा रहे हैं रोहित देसाई को। रोहित देसाई तैयार। फिर एक बार साइड स्क्रीन की तरफ से कोई समस्या पैदा हो रही है रोहित देसाई के लिए। ओ एक और हवाई स्ट्रोक सीधे कमेंट्री बॉक्स में गेंद आ रही है, यह छक्का बनता हुआ। स्लॉट में गेंद मिली, दूसरी मर्तबा स्लॉट में गेंद को डाल रहे हैं सुशांत कोवाडकर। और जैसे स्लॉट में गेंद मिली वहां पर ज़बरदस्त हमला बोला और वो हमला सीधे आया, वो कमेंट्री बॉक्स के ऊपर गेंद आई है और ये छक्का बनता हुआ। इस छक्के की मदद से अब जा पहुंचे 10 पर रोहित देसाई। बड़े आक्रामक तरीके का तेवर दिखा रहे हैं रोहित देसाई। और 2 गेंदे, एक चौका एक छक्का, एक डॉट गेंद कराने में कामयाब जरूर हुए हैं सुशांत कोवाडकर, लेकिन रन संख्या बनी है 10। शॉर्ट गेंद डाली, ओ क्या खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला है, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव खेला है, पॉइंट और कवर के बीच में से निकाल दिया। बहुत सारे खिलाड़ी तैनात हैं उस इलाके में, लेकिन उनमें दरार पैदा करने में कामयाब हुए हैं और गेंद गई है 4 रन के लिए। तो ये रोहित देसाई का बल्ला ज़बरदस्त चल रहा है। पहली ओवर में उन्होंने सुशांत कोवाडकर के ऊपर हमला बोला है और वो भी ज़बरदस्त तरीके से बोला है। 1 छक्का 2 चौके, रन संख्या अब बनी है 14 बगैर किसी नुकसान के। बड़ी धमाकेदार शुरुआत, दमदार शुरुआत, फ्लाइंग स्टार्ट पहले ही ओवर में दे रहे हैं रोहित देसाई। अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। कल के मैच में 66 रन बना रहे थे वो, आज भी वही फॉर्म बरकरार रखने में कामयाब।
स्लॉट में गेंद, सीधा ड्राइव, तरकश में से निकला हुआ तीर, सीधी गेंद गई है 4 रन के लिए। स्लॉट में तीसरी मर्तबा गेंद डाली और नतीजा वही जो पहले हुआ। शॉर्ट गेंद पर चौका, स्लॉट में गेंद मिली तब छक्का बना, 2 चौके बने, तो ये 18 रन अब तक दे चुके हैं इन 5 गेंदों पर सुशांत कुवाडकर, सबसे प्रमुख गेंदबाज। तो बहुत ही विस्फोटक तरीके की शुरुआत हो रही है मार्ग राइजिंग्स के सलामी जोड़ी की तरफ से। ओ ये भी निश्चित तौर पर चौका बनेगा, लेकिन भाग्यशाली है रोहित देसाई। तकरीबन गेंद चूम रही थी, उस अंदरूनी किनारे लेने के बाद स्टंप्स के बहुत पास से गुजर गई और ये चौका बना। लेकिन किस्मत साथ दे रहा था इस मर्तबा रोहित देसाई का। विश्वसनीय स्ट्रोक तो नहीं कहा जा सकता, इस आखिरी गेंद पर चौका जरूर बना, लेकिन बिल्कुल चूमते चूमते हुई गेंद गई है स्टंप्स के बगल से और ये फाइनल के ऊपर चौका बनने के बाद बहुत ही महंगा ओवर समाप्त हुआ। अब तक अगर हम देखेंगे इस पूरे के.आर. शेट्टी T20 मेमोरियल टूर्नामेंट में, तो पहले ओवर में किसी गेंदबाज ने 22 रन तो नहीं खर्च किए होंगे, लेकिन आज सुशांत कुवाडकर 22 रन खर्च कर रहे हैं पहले ओवर में। और क्या विस्फोटक तरीके की शुरुआत रोहित देसाई कर रहे हैं और लगातार उन्होंने 4 चौके 1 छक्का जड़ा दिया था और पहले ओवर में 22 रन बनने के बाद 100 स्पोर्ट्स देखेंगे अब वो कैसे वापसी करेंगे इस मैच में, क्योंकि बड़े धमाकेदार शुरुआत करने में कामयाब हुए हैं रोहित देसाई। राजेंद्र दंगनवर को गेंद सौंपी है। सबसे प्रमुख गेंदबाज सुशांत कुवाडकर के ऊपर आज हमला बोला है। सबसे अच्छी गेंदबाजी करने वाले सुशांत कुवाडकर, पूरे श्रृंखला में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट भी चटकाए हैं, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूट पड़े हैं रोहित देसाई उनके गेंदबाजी पर। और पहली ओवर में उन्होंने 22 रन जोड़े हैं, 4 चौके 1 छक्का। अब राजेंद्र दंगनवर के पास गेंद है, नीलेश पाटिल के पास स्ट्राइक है। 155 रनों का जवाब दे रही है मार्ग राइजिंग स्टार्स की टीम। पहले ओवर में 22 रन। अब राजेंद्र दंगनवर दूर वाले छोर से ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज हैं और वो गेंदबाजी करेंगे नीलेश पाटिल को। अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद करा रहे हैं, लेकिन रक्षात्मक स्ट्रोक खेलना पसंद किया। कवच के इलाके में गेंद को खेल रहे हैं नीलेश पाटिल। रन की कोई गुंजाइश नहीं है, गेंद फील्ड होकर वापस लौट रही है राजेंद्र दंगनवर के पास। बैकफुट पर गया, इस गेंद को फिर एक बार ड्राइव जरूर किया है, लेकिन फील्डर को छकाने में कामयाब नहीं हुए। कवच के इलाके में गेंद फील्ड होने के बाद रन की गुंजाइश खत्म की और गेंद वापस राजेंद्र दंगनवर के पास। स्लॉग स्वीप खेला, पसंदीदा स्ट्रोक है और ये चौका मिड विकेट के इलाके में बनाते हुए थोड़ी फ्लाइट दे रहे थे गेंद को राजेंद्र दंगनवर, और जैसे फ्लाइटेड गेंद आई इस गेंद को उन्होंने स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला और गेंद मिड विकेट के इलाके में जो खाली पड़ा हुआ इलाका था उस इलाके में चौका बनाकर अपना खाता खोल रहे हैं नीलेश पाटिल। पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 26। तो सभी चौकों में रन बने हैं, छक्कों में रन बने हैं।
बैकफुट पर गए, जगह बनाई, जगह बनाकर इस गेंद को कट करना चाहा, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से गेंद लगी, विकेट पर ही गिरी गेंद, कोई रन नहीं बना। अब तक जो 26 रन बने हैं उसमें 5 चौके 1 छक्का शामिल, अब तक कोई सिंगल रन नहीं आता हुआ। स्वीप किया, इस गेंद को मिलिंद चौहान ने डाइव लगाई, शरीर को झोंककर, शरीर की दीवार बनाकर उस गेंद को उन्होंने रोका शॉर्ट फाइनल के इलाके में, और 1 रन मिलता हुआ नीलेश पाटिल को। नीलेश पाटिल खेल रहे हैं 5 रन बनाकर, 22 रन बनाकर खेल रहे हैं रोहित देसाई। पारी की रन संख्या बनी है 27, बिना किसी नुकसान के मार्ग राइजिंग स्टार्स। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला जरूर था, लेकिन रन नहीं मिलेगा। कबस के इलाके में गेंद फील्ड हुई, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। ओवर समाप्त हो रहा है, तो ये अच्छा ओवर मैं कहूँगा। 5 ही रन आए इस ओवर में। पहले ओवर में सुशांत कोवाडकर के 22 रन आने के बाद राजेंद्र दंगनवर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 ही रन खर्च किए हैं। तो 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 155 का जवाब दे रही है मार्ग राइजिंग स्टार्स की टीम। अब तक 27 रन बन चुके हैं उनके लिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। 22 रन बनाकर खेल रहे हैं रोहित देसाई और 5 रन बनाकर खेल रहे हैं नीलेश पाटिल। सुशांत कोवाडकर पर भरोसा जताया है कप्तान ने अभी भी। एक बात तो मैं मानता हूं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई गेंदबाज अगर एक आधा ओवर वो खर्चीला कर रहा हो तो वो बुरा है, ऐसा तो नहीं है। T20 के फॉर्मेट में आपको एक बार और उनको मौका देना चाहिए, वैसा कर रहे हैं कप्तान इस वक्त। एक बार और मौका दे रहे हैं सुशांत कोवाडकर को वापस से करने का। ओहो, ये गेंद बहुत खराब डाल रहे थे, गेंद तो जाएगी 4 रन के लिए। विकेट कीपर को लगी गेंद, वाइड का इशारा भी हो रहा है, और विकेट कीपर के पैड्स को लगने के बाद गेंद कहाँ गई है तो फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गई है। तो ये वाइड का इशारा भी होता हुआ तो 5 रन ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे मार्क राइजिंग्स की टीम को, लेकिन 5 रन कोवाडकर के खाते में भी जाएंगे। तो अब रन संख्या इन 5 रनों की मदद से आगे बढ़ रही है 32 बिना किसी नुकसान के। इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला नीलेश पाटिल ने, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। अच्छी तालमेल और समझबूझ भरा ये रन था, और इस अच्छे तालमेल के साथ नीलेश पाटिल ने 1 रन दौड़कर पूरा करने के बाद अब रन संख्या आगे बढ़ रही है इस वक्त 33। पर कोई नुकसान नहीं। कोवाडकर की अगली गेंद, ओह बहुत बढ़िया गेंद डाली। इस मर्तबा खामोश रखने में कामयाब हुए हैं। सीध में गेंद को डाला था, और सीध में पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल भी लेकर गेंद सीधी आ रही थी रोहित देसाई की तरफ, और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कॉपी बुक स्टाइल की तरह उन्होंने खेला। सीधी बॉलर की दिशा में गेंद आई, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाकर वापस लौट रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। सुशांत कोवाडकर तैयार, सामना करेंगे रोहित देसाई। ओ यॉर्कर डाली, बहुत चतुराई के साथ गेंद को डाल रहे थे, बड़े बुद्धिमान गेंदबाज हैं।
आगे पीछे कर रहे थे रोहित देसाई। कभी कभी वो स्टंप्स के ठीक ऑफ स्टंप के ऊपर आकर खड़े रहते हैं, पूरे स्टंप्स खुले छोड़ते हैं और चलते चलते वो आगे भी आते हैं। बहुत कुछ ऐसा करते हैं ताकि गेंदबाज का लक्ष्य थोड़ा सा विचलित हो, लेकिन इस मरतबा एक सटीक यॉर्कर डाली उन्होंने और परिणाम स्वरूप उसको गेंद को खोद कर खेलना पड़ा बिना किसी रन के। और अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही और जगह बनाकर उस गेंद को खेलने के चक्कर में बीट हुए, कोई रन नहीं बना। तो ये अच्छा ओवर चलता हुआ फिलहाल कुवाड़कर का, ये वाइड का वो रन ज़रूर बने, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर थोड़े विस्फोटक अंदाज में जो बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित देसाई, उनको खामोश भी रखा है इस ओवर की। जहाँ तक बात करें हम, रन संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है। 33 रन बगैर किस नुकसान के 122 के दरकार है यहाँ से लेकर आगे। क्वाड करके गेंद फिर एक बार मजबूर किया, विवश किया उस गेंद को रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने के लिए। अब बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वो जान गए हैं कि कहाँ पर टप्पा खिलाने के बाद कहाँ पर गेंद जाएगी, रोहित देसाई के क्या स्ट्रोक्स है, उसको देखकर उन्होंने 3-4 मरतबा ऐसी गेंदबाजी की है जहाँ पर रोहित देसाई को हाथ खोल कर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। 5 ही रन आए हैं कुल मिलाकर इस ओवर में, 5 नहीं बल्कि 6 रन आए हैं। ओहो हो, क्या बढ़िया गेंद डाल रहे हैं। अपराइट सीम का अच्छा इस्तेमाल किया। सीम पर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी एंगल बनाकर कोन बनाकर बाहर की तरफ गई है। उस गेंद का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे रोहित देसाई, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और छकाने के बाद गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। पिछला ओवर 22 रनों का चला जाने के बाद सुशांत कोवाड़कर ने 6 रन दिए हैं इस ओवर में और कुल मिलाकर अब उनका बॉलिंग विश्लेषण है 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 28 रन कोई विकेट नहीं और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 33 रन बना रही है मार्ग राइजिंग स्टार्स की टीम बिना किसी नुकसान के। 33 फॉर नो लॉस, 155 रन का लक्ष्य है उनके सामने। अभी भी 122 रनों की दरकार और 122 रन बनाने के लिए 17 ओवर का खेल होना बाकी, यानी कि आपके पास अब 102 गेंदें बाकी हैं और 102 गेंदों में यहाँ से लेकर आगे 122 रन उनको बनाने हैं। तो राजेंद्र दंगन्नवर के पास गेंद सौंपी तो गई थी ज़रूर, लेकिन पता नहीं वो डालेंगे या फिर कोई और गेंदबाज आएगा परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए। लगता तो ऐसा है कि राजेंद्र दंगन्नवर को 1 ओवर डलवाने के बाद उनको विश्राम देने का फैसला कर रहे हैं कप्तान और अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं राजेंद्र दंगन्नवर की जगह पर। आर्यन उपाध्याय को लाया जा रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर थी, काटा बदल कर गेंद जा रही थी। गुडलन पर टप्पा खिलाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली गेंद। नीलेश पाटिल ने जांचा पर का देखा, बल्ला गेंद के लाइन से अलग किया, गेंद को जाने दिया। विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं बना। वापस चले अपने बॉलिंग मार्ग पर आर्यन उपाध्याय। ओ हवाई स्ट्रोक खेला जरूर है, लेकिन नो मैच लाइन में गेंद गिरेगी। स्वीपर कवर के खिलाड़ी ने आकर गेंद को उठाया। इनसाइड आउट खेल तो रहे थे जरूर, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं बनी नीलेश पाटिल के बल्ले से, लेकिन 30 गज दायरा पार किया था गेंद ने। स्वीपर कवर के खिलाड़ी ने उस गेंद को रोका, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ नीलेश पाटिल के खाते में 7 पर जा पहुंचे नीलेश पाटिल। 22 पर खेल रहे हैं रोहित देसाई और पारी की रन संख्या 34 रन बिना किसी नुकसान के।
34 for no loss. और स्क्वायर कट किया उस गेंद को, दंदनाती हुई गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में 4 रन के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था रोहित देसाई के बल्ले से। गेंद बहुत तेज गई, उस पॉइंट के खिलाड़ी पर के ऊपर खड़े हैं दंगनवर, उनके पास भी कोई अवसर नहीं था, पलक झपकते ही उनको गेंद चकमा देकर गई और मानो सुई में धागा बिरो दिया हो उस तरीके से उस गेंद को खेला। क्योंकि पॉइंट और गली के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उसमें भी उन्होंने गैप ढूंढ कर खेला। ये चौका बनता हुआ। हाँ, चौकों की बोली बोल रहे हैं रोहित देसाई, कोई सिंगल्स का रन नहीं है उनके खाते में। ओ सीधा ऑन ड्राइव खेला है, ओ ये मौका बन सकता था कैच का, लेकिन छोड़ा है वहां पर कैच। विनोद देवाडिगा वो कैच छोड़ रहे हैं, एक बड़ा खिलाड़ी का कैच विनोद देवाडिगा के हाथ से छूटता हुआ उस मिड ऑन के इलाके में। ऐसा लगा कि उनके गिरफ्त में गेंद आई है, लेकिन बाद में छिटक भी गई। और ऐसे बैट्समैन का कैच छोड़ना खतरे से खाली नहीं है और बड़े विस्फोटक अंदाज में उनकी बल्लेबाजी चल रही है। एक ज़रूर अवसर बना था, आर्यन उपाध्याय ने विकेटों की फसल तो पैदा की, लेकिन काट नहीं पाए विनोद देवाडिगा मिड ऑन के ऊपर। लेकिन 1 रन खाते में जाता हुआ रोहित देसाई के। ओ हवाई स्ट्रोक मिड विकेट के इलाके में, एक टप्पा पड़ने के बाद गेंद सीमा रेखा की तरफ गई है 4 रन के लिए। थोड़ी ओवर पिच गेंद को डाल रहे थे, झट से उन्होंने इस गेंद को उठा दिया था फ्लिक के अंदाज में। और मिड विकेट का इलाका वैसे भी खाली पड़ा हुआ है, कोई खिलाड़ी नहीं है, सुरक्षा नहीं है उस इलाके में। और मिड विकेट के इलाके से गेंद को खेलने के बाद रोहित नीलेश पाटिल के खाते में यह चौका जाता हुआ। रन संख्या अब 43। सफल हुए, सफल होकर खेला। एक बार और मिड विकेट के इलाके में गेंद जाएगी, ये दूसरी मर्तबा गेंद उसी इलाके में जा रही है 4 रन के लिए। तो नीलेश पाटिल अब धीरे धीरे रोहित देसाई के जश्न में शामिल हो रहे हैं। एक छक्के लगने के बाद अब प्रेरित होकर जबरदस्त आक्रमण करते हुए हमें नजर आ रहे हैं नीलेश पाटिल। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 4 ओवर में चार ओवर में 47। 15 पर खेल रहे हैं नीलेश पाटिल और 27 रन बनाकर खेल रहे हैं रोहित देसाई। अब दंगनवर को इसलिए विश्राम दिया गया था क्योंकि उनको छोर बदल कर गेंदबाजी चाहिए थी, इसलिए 1 ओवर आर्यन उपाध्याय उस छोर से कर रहे थे। तो पार्थ पाटिल की सोच ये है कि दंगनवर आमतौर पर पवेलियन छोर से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन 1 ओवर उन्होंने दूर वाले छोर से करवाया। लेकिन दंगनवर ने कहा होगा कि भाई ये पवेलियन छोर से गेंदबाजी करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए शायद उन्होंने अब पवेलियन छोर से इस गेंद को खेला है, लेकिन रन नहीं मिलेगा। मिड विकेट पर गेंद फील्ड हुई और वापस कवच के इलाके में गेंद फील्ड होने के बाद वापस गेंद आई है राजेंद्र दंगनवर के पास। अब थोड़े से बादल हैं मैदान पर, राजेंद्र दंगनवर तैयार हो रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए। रोहित देसाई उनके सामने खड़े हैं।
रोहित देसाई 27 पर खेल रहे हैं, सामना करेंगे राजेंद्र दंगनवर का। उठा दिया हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन पर फील्डर कैच को लेने में कामयाब हुए हैं पार्थ पाटिल और पहला विकेट का नुकसान होता हुआ रोहित देसाई वापस लौटेंगे पवेलियन में। स्ट्रोक तो अच्छा बनाया उन्होंने, लेकिन गेंद सपाट गई है सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर। कैच को लपकने में कामयाब हुए हैं पार्थ पाटिल। तो थर्ड अंपायर की तरफ अंपायर इशारा कर रहे हैं कि क्या वो बाउंड्री के अंदर कैच लिया था या नहीं, ये देखेंगे अंपायर। लेकिन क्या आकर्षक पारी खेली है रोहित देसाई ने, छोटी सी पारी लेकिन बहुत ही विस्फोटक पारी। मानो रनों की सुनामी आई थी पहले ही ओवर में और रनों की बारिश हुई थी पहले ही ओवर में। सुशांत कुवाड़ करके गेंदबाजी पर 22 रन और आउट का इशारा थर्ड अंपायर दे रहे हैं। साफ सुथरा कैच पकड़ा था, बाउंड्री के ठीक अंदर खड़े थे पार्थ पाटिल और रोहित देसाई ने शानदार पारी खेली 27 रनों की और वापस लौटे हैं पवेलियन में। लेकिन मनोरंजन बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे सभी दर्शकों का जो कि यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आईटी स्पोर्ट्स के माध्यम से क्रिक हीरोज़ पर आप अगर देख रहे हैं या फिर मैदान पर आप हमारे आंखों देखा हाल सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर इन तमाम लोगों का मनोरंजन करने में आज रोहित देसाई कामयाब हुए हैं। बहुत ही करारे उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए हैं। पहले विकेट का नुकसान होने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस, सुकून की सांस ले रही है साई स्पोर्ट्स की टीम, क्योंकि सबसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट अब मिलता हुआ राजेंद्र दंगनवर को। और कप्तान पार्थ पाटिल की जो योजना थी कि उनको छोर बदल कर गेंदबाजी करवाने के लिए बुलाया था, ये जो चाल चली थी ये चाल कामयाब हुई है और राजेंद्र दंगनवर ने पवेलियन छोर से आकर विकेट लिया और वो भी रोहित देसाई जो कि 27 रन बना रहे थे। महज 16 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 5 चौके 1 छक्का उनके खाते में शामिल था। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। राहुल वेर्णेकर आए हैं नए बल्लेबाज अब नीलेश पाटिल का साथ देने के लिए। तो रनों की बारिश हुई, उसके बाद रोहित देसाई का विकेट खो रही है अब मार्क राइजिंग स्टार्स की टीम। 155 का तगड़ा जवाब दे रही है और बड़े विस्फोटक तरीके की शुरुआत एक फ्लाइंग स्टार देने में कामयाब हुए हैं। 47 रनों की भागीदारी आखिरकार 26 गेंदों में 47 रनों की भागीदारी तोड़ने का श्रेय जाएगा राजेंद्र दंगनवर को और पार्थ पाटिल को। फ्लाइटेड गेंद, हाफ वॉली बनाकर इस गेंद को वाइडिश मिड ऑन के इलाके में खेला है। 4 रन बनेंगे। आते ही स्कोरिंग का सिलसिला राहुल वेर्णेकर जारी कर रहे हैं। थोड़ी सी और उनके बगल से गेंद गई और ये चौका बनने के बाद अर्धशतक पूरा होता हुआ मार्क राइजिंग टीम की रन संख्या बनी है अब 51, 51 for 1। 104 रनों की ज़रूरत है। 104 रन चाहिए यहाँ से लेकर आगे, उसका कोई सवाल नहीं है। ये 5वां ही ओवर चल रहा है, इसके बाद और 15वें ओवर का खेल बाकी है, यानी कि 90 और 3 93 गेंदों का खेल बाकी है। राहुल वेर्णेकर के लिए ये गेंद अच्छी टर्न लेकर जा रही थी, अच्छी स्पिन हुई गेंद, जगह बनाकर उस गेंद को कट करने की कोशिश कर रहे थे राहुल वेर्णेकर। गेंद की थोड़ी सी उछाल पर वो बीट हुए और गेंद वापस लौट रही है राजेंद्र दंगनवर के पास। तो रोहित देसाई का विकेट खोने के बाद राहुल वेर्णेकर आते ही स्पष्ट संकेत दिए हैं चौका लगाकर कि वो भी कुछ आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, जगह बनाकर उस गेंद को खेला है राहुल वेर्णेकर ने। रोहित पुरवाल की तरफ इस गेंद को खेला उन्होंने, उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद फील्ड होने के बाद 1 रन दौड़कर पूरा किया। अब 5 पर खेल रहे हैं राहुल वेर्णेकर और पारी की रन संख्या आगे बढ़ रही है 52, 52।
एक विकेट खोने के बाद गंगानगर अब तक इस ओवर में 5 रन दे चुके हैं और एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है रोहित देसाई की। ओ छोड़ दिया था उस गेंद को, अच्छी फ्लाइट तो दे रहे थे, जरूर लालच में लाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन लालच में आए नहीं नीलेश पाटिल। उस गेंद को उन्होंने जाने दिया विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं बना, ओवर समाप्त हुआ। तो 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद अब रन संख्या बनी है 52, 10 रन से भी ऊपर चल रहा है रनों की औसत और 155 का तगड़ा जवाब देने में अब तक कामयाब हुई है। अब देखिए सूरत हाल ये है इस मैच का कि अभी भी 15 ओवर का खेल बाकी है। 15 ओवर में यहाँ से लेकर आगे 103 रनों की जरूरत है, यानी कि आपके पास अब 90 गेंदों का खेल बाकी है और 90 गेंदों में 130 रन चाहिए मार्ग राइजिंग 11 की टीम को। तो 9 विकेट साई स्पोर्ट्स को लेने हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आने के लिए तैयार कौन होगा ये हम देखेंगे। काफी सारे चर्चाएं चल रही है मैदान पर कि किसको गेंद सौंपी जाए। खुद पार्थ पाटिल अब मोर्चे पर लगेंगे, कप्तान वो अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में लगे रहेंगे क्योंकि ये जोड़ी भी बड़ी खतरनाक है और जिस तरीके से शुरुआत हुई है वो तो ज़बरदस्त हुई है। आज मानो रनों का ज्वालामुखी फटा था पहले ही ओवर में जिमखाना के मैदान पर। रोहित देसाई के बल्ले से आज कई आकर्षक चौके और छक्के निकले, लेकिन जितनी जल्दी उनका बल्ला गर्म हुआ उतनी जल्दी ठंडा करने में भी कामयाबी मिली है इस वक्त साई स्पोर्ट्स के गेंदबाज राजेंद्र गंगानगर को। छठा ओवर लेकर आने के लिए तैयार अब सामना करेंगे राहुल वेर्नेकर। 5 रन बनाकर खेल रहे हैं राहुल वेर्नेकर। 15 पर नीलेश बात किए, गेंद बैकफुट पर गए, जगह बनाई, पंच किया, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद जाएगी 4 रन। रोहित पोरवाल के पास मौका नहीं था उस गेंद को रोकने का, काफी तेज तर्रार शॉट खेला था, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाल रहे थे पार्थ पाटिल, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को डाल रहे थे, जगह बनाने का मौका मिला और राहुल वेर्नेकर ने जगह बनाकर उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में ड्राइव खेला और रोहित पोरवाल के पास कोई मौका नहीं था और वो गेंद गई है 4 रन के लिए। तक 56 स्कोर बनता हुआ 99 रनों की जरूरत है, 89 गेंदों का खेल बाकी। गेंद और रनों के बीच में 10 का अंतर फिलहाल तो चलता हुआ। बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन इस मर्तबा गेंद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल लेकर आई, बैट पर लगी, पैड पर लगी, वहीं पर लुढ़क कर रह गई गेंद। रन तो नहीं बनेगा, विकेट कीपर ने गेंद को उठाकर वापस लौटा दिया है पार्थ पाटिल को डॉट गेंद कराते हुए। अच्छी गेंद डाल रहे हैं पार्थ पाटिल, ओह क्या खूबसूरत फील्डिंग, डाइव लगाकर उस गेंद को उन्होंने रोका और कोई रन लेने का मौका नहीं दिया इस बार राहुल वेर्नेकर को। एक चौका खाने के बाद 2 डॉट गेंदें कराने में कामयाब पार्थ पाटिल। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, कट किया, इस गेंद को कोई हिला तक नहीं अपने जगह से, 4 रन। सब दंग रह गए, सन रह गए उस स्ट्रोक को देखकर। एक बहुत अच्छा स्क्वायर कट का ये शॉट था, उस पॉइंट और कवर पॉइंट के तरफ गेंद गई है, कोई मौका नहीं है। 4 रन के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 60 रन, एक विकेट खोने के बाद मार्ग राइजिंग स्टार्स की टीम। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। थोड़ी तेज गेंद आ रही थी इस मर्तबा राहुल वेर्नेकर के लिए, उस गेंद को जगह बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, बीट कराते हुए गेंद गई है, कोई रन नहीं। इस बार भी ड्राइव किया है, ऑन ड्राइव, बॉलर के बगल से गेंद गई है, लॉन्ग ऑन से फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया है राहुल वेर्नेकर ने।
इस एक रन की मदद से अब ये ओवर भी समाप्त हो रहा है, तो पावर प्ले का सिलसिला खत्म हुआ। 61 रन बने हैं, 10 रन प्रति ओवर के रफ्तार से रन बना रही है मार्ग राइजिंग स्टार्स की टीम एक विकेट खोने के बाद। अब गेंदबाजी करने के लिए राहुल नाइक आए हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी है राहुल नाइक। अब जितने भी विकल्प हैं साई स्पोर्ट्स के पास, सभी विकल्पों को कप्तान टटोल कर देखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस ढंग से रन बने हैं विकेट लेकर ही इस मैच में वो वापसी कर सकते हैं। ये तो निश्चित तौर पर सोच रहेगी साई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की, इसीलिए वो लगातार गेंदबाजी में तब्दीली करके देख रहे हैं, ताकि 2-3 विकेट उनको अगर जल्दी जल्दी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इस मैच के ऊपर वो पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि जिस ढंग से बल्लेबाजी हो रही है मार्ग राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाजों की तरफ से, वैसे रन बचाकर ये मैच जीतना आसान तो नहीं है साई स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए उन्होंने अब राहुल नाइक को मोर्चे पर लगाया है पवेलियन एंड छोर से। अच्छी गेंद डाल रहे हैं राहुल नाइक, उस यॉर्कर लेन की गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल रहे हैं राहुल वेर्नेकर। बगैर किसी रन के फॉलो थ्रू में गेंद को उठाकर वापस चले राहुल नाइक। ऑफ द टोस फ्लिक किया इस गेंद को मिड विकेट के इलाके में, डीप में फील्डर मौजूद, 1 रन बनेगा और इस 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन 1 विकेट खोने के बाद 62 for 1। बैकफुट पर गए इस मर्तबा नीलेश पाटिल ने मिड विकेट के इलाके में उस गेंद को घुमाकर खेला है और डीप में से जब तक फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते 1 रन और अपने खाते में जोड़ा है नीलेश पाटिल ने और रन संख्या बनी है अब मार्ग राइजिंग स्टार्स की 63 रन 1 विकेट खोने के बाद 63 for 1। 155 का जवाब दे रही है। अच्छी गेंद डाल रहे हैं राहुल नाइक, सीध में गेंद को बिल्कुल डाल रहे हैं ताकि कोई आड़ा टेढ़ा शॉट ना खेल सके, बाहें खोलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं और सीधी ब्लॉक होल में उस गेंद को डालने के बाद कोई रन नहीं बना। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, पंच किया उस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में फील्डर तैनात दंगा नंबर के रूप में उन्होंने गेंद को रोका, थ्रो किया, 1 रन बनेगा। उस 1 रन की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 64 64। 1 विकेट खोने के बाद बल्लेबाजों के लिए अनुकूल विकेट है। बैकफुट पर गए, पुल किया, गेंद हवा में, कोई खिलाड़ी तो नहीं है उस इलाके में और ये छक्के का इशारा होता हुआ। थोड़ी शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, थोड़ी कमजोर गेंद जैसे ही मिली। बैकफुट पर जाकर नीलेश पाटिल ने पुल किया उस गेंद को और उस मिड विकेट के इलाके में छक्का बनने के बाद ये ओवर समाप्त हो रहा है। और अच्छी गेंदबाजी कर तो रहे थे, पहले 5 गेंदों पर ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक ही छोटी गेंद डाली जिस पर राहुल नाइक को दंड भुगतना पड़ा और छक्के के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। तो 7 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 70 रन बना रही है मार्ग राइजिंग स्टार्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर। इससे पहले कि नए ओवर की शुरुआत हो, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं हमारे अंग्रेजी के क्रिकेट कमेंटेटर चेतन बैलूर। Parth Patil there this time to the batsman Rahul Werniker, going out of the front foot and playing with soft hands there, tapping it all along the pitch area. Parth Patil fielding of his own bowling for a dot ball. Flighted delivery, played it going down on one knee and towards
long on. Good drive there on a couple of bounces, and the scorecard moves to 71 with that single taken. Stepped out, going to the pitch of the ball, and again driving it all along the carpet towards long on for another single, and the scorecard moves to 72 for the loss of 1 wicket. One more for the taking towards wide-ish of sweeper cover there, wanting to, but they'll have to settle down for a single. With that single, the scorecard moves to 73. That gets Nilesh Patil on strike. Very good run rate they are maintaining here. Mark Rising Stars come back very strongly. Top edge there, and Milind Chavan diving in the front, and what a catch that is at the hands of Milind Chavan. It was a difficult one, never looked that he's going to go there, but in a time did he go reach out to the ball, diving forward, did he take that catch there. Good catch by Milind Chavan to dismiss Nilesh Patil. So the second wicket goes down at a score of 73 in the form of Nilesh Patil, trying to paddle sweep it, taking the top edge of the bat. Good bowling there by Parth Patil, flighting the delivery, asking the batsman to DJ DK sweep it. Dharmendra Dhanusha Nepal Well, it is Shivam Nesvikar there. Shivam Nesvikar coming on at the fall of Nilesh Patil. Well, Nilesh Patil got 23 runs of the 14 deliveries that he faced with 1, 6 and 3 boundaries. Good 23 did he play. So 73 for 2 now. They're going quick and fast towards the required run rate that they want. Meanwhile, Sai Sports have done in well enough to take that second wicket in the form of Nilesh Patil. Good catch there by Milind Chavan, diving forward in the shot. Fine leg. Slip comes in position for Shivam Nesvikar. Played with soft hands towards shot cover there. Rajendra Danganawar coming in quickly and fielding. Importantly, a dot ball to finish the over. Good bowling there by Parth Patil. Important to pick up that wicket of Nilesh Patil there. The captain leading from the front. Good bowling as well by Parth Patil. With that, it also completes the overs after the completion of 8 overs. 73 runs on the board for the loss of 2 wickets. Once again, it is Rahul Naik coming into the act. Rahul Naik comes up with his bowling quotas. Second over and innings 9th over to the batsman Rahul Wernikar. Wanting to play on the offside, maybe taking the thick edge of the bat and going on towards square leg. The fielder coming in from deep mid wicket and fielding Punit there. The batsman cross for another single. With that single, the scorecard moves to 74 for loss of 2 wickets. That gets Shivam Nesvikar on strike there. Rahul Wernikar is batting on 19 runs.
full pitch delivery there, played off his toes towards the long on. Devadiga comes in and fields. The batsman crossfire and the single. With that single, the scorecard for the ticks along to 75. Going on to the back foot and cutting him there again with soft hands. The ball going to the short third man region. One more for the taking. With that single, the scorecard for the ticks along to 76. That gets Shivam Nisarkar on strike to face Rahul Naik. Going on to the back foot and cutting straight to the fielder at cover there, Sushant Kwadkar for a dot ball. Good dot ball there by Rahul Naik to the batsman Shivam Nisarkar. Going on to the back foot and again playing towards the short mid-wicket area. The fielder coming in this time, Rohit Porwal there, slightly fumble at the mid-wicket, short mid-wicket area. The batsman crossfire and the single. With that single taken, the scorecard for the moves to 76, 77 in fact, for the loss of 2 wickets. That gets Rahul Wernicker on strike to face Rahul. Rahul to Rahul. Played with soft hands towards square leg. The fielder coming in from fine leg and fielding Milind Chavan there. One more for the taking. With that, the scorecard moves to 78 for the loss of 2 wickets. It also completes the over with that single of the previous delivery. 9 overs have been bowled and the scorecard reading 78 for the loss of 2 wickets. Stepped out there and driven it loftedly over long gone for a boundary. The fielder being just a spectator there. Good shot there by Rahul Wernicker this time. With that boundary, the scorecard moves to 82. Good shot there by Rahul Wernicker, stepping out to the batsman, to the baller, to the pitch of the ball, and then driving it loftedly towards long on for a boundary. 82 now on the scorecard there. Going on to the back foot and playing off his pads there towards a deep square leg. Rahul Naik comes in and fields. The batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard moves to 83 runs for the loss of 2 wickets. That gets Shivam Nisarkar on strike to face Parth Patil. Played with soft hands there, a gentle push of the forward defensive shot and his follow through on the pitch area. Parth Patil fielding of his own, bowling there for a dot ball. Good bowling there and a good field setup by Parth Patil to the batsman Shivam Nisarkar.
Flighted delivery going down on one knee, paddle sweeping it towards mid-wicket. Punit Dixit coming in and fielding. The batsman have to settle down for a single. Good fielding there by Punit on the boundary line to give away a single only. With that single as the batsman crossed over, the scorecard further ticks along to 84 runs. For the loss of 2 wickets. That gets Rahul Wernicker on strike to face Parth Patil. Trying to go down towards the leg side and field it. Milind Chavan, the fielder. Yeah, a lot of aggression shown by Milind Chavan on the field there. Some noise and some hoovering from the audience and spectators. But good fielding there by Milind Chavan, not distracted by the people around the boundary line. One more for the taking. With that, the scorecard further ticks along to 85 runs. That gets Shivam Neswekar on strike. Oh, this time beating all ends up. Not only did the batsman, also the wicket keeper there. We got to wait for the umpire signalled by umpire, and 4 more for the taking. Not only did the batsman got beaten up, that is what the bowler is annoyed with. The wicket keeper also beaten and boundary for the taking. With those 4 runs, the scorecard ticks along to 89 after the completion of 10 overs. Drinks is called onto the field. 10 overs have been bowled and the scorecard reading 89 runs. Remixed by DJ VITHAL. विशाल
Patil got 23 runs of the 14 deliveries with 3 boundaries and 1 6. 2 men out there in the middle. Shivam Nesrekar is batting on 3 runs and Rahul Werniger is batting on full pitch delivery there and driven all along the carpet towards long off. Vinod Devadiga in front of the commentary box fields it. The batsman crossover for a single. With that single taken, the scorecard moves to 90. Again, full pitch delivery showing the face of the blade, driven it all along the carpet to Parth Patil at long off for the captain. Another easy single for the taking. Scorecard moves to 91. Oh, going down and one knee and paddle sweeping it for a huge 6 there. What a shot that was at the bat of Rahul Werniger. With that 6, the scorecard moves to 97. What a shot that was at the bat of Rahul Werniger to get that huge 6. Good shot there by Rahul Werniger. Once again, Rahul Naik to Rahul Werniger. Watchfully played with soft and gentle hands there, wanting a single. Shivam Nesrekar asking for a single. And no, said Rahul Werniger there. No run for the taking. Good dot ball there by Rahul Naik after being hit for a boundary. Going on to the back foot and cutting him straight to the field. ANAND MALVI there for a dot ball. Good bowling there by Rahul Naik after being hit for a 6 there, coming back strongly and bowling 2 dot balls in succession. Played with soft hands of the back foot towards deep mid wicket area. Sushant Kwadkar comes in. Good fielding there, coming in quickly, and they'll have to settle down for a single. With that single, it also ends the overs after the completion of 11 overs. Scorecard reading 98 for the loss of 2 wickets. Good 98 runs after the completion of 11 overs. Parth Patil coming into the act with his bowling quota's 3rd over and innings 12th over to the batsman Rahul Werniger. Again, paddle sweeping in, going down and one knee and sweeping him towards the square leg. Rahul Naik comes in and fields the batsman cross over for a single. With that single, the scorecard further ticks along to 99. 36. And Rahul Werniger moves to 36. He's got a chance to get a 50 there, Rahul Werniger. That gets Shubham Nesrekar on strike to face Parth Patil. Appeal there, but no, says umpire. Only bowler interested. Half-hearted appeal there. Umpire said down the leg side, maybe trying to flick it off his pads. Importantly, a dot ball there. Score still stands at 99 runs. Going to the back foot and again driving it wideish off, long off there. Vinod Devadiga comes in and fields the batsman cross for a single. With that single, 100 comes up on the board. Good 100 runs for Marg Rising Stars in the 12th over of the innings. In 11.3 overs and 100 comes up for Marg Rising Stars.
Sai Sports have to really do something here, strangulate the runs and also try to pick up wickets. Again going onto the back foot and cutting it, punching it straight to the fielder. Rohit Purwal there in coverage, in good stop. Did he do it? Quickly going down there. It looked like a run, but no run for the taking. Good dot ball there. Good fielding by Rohit Purwal for a dot ball. Off his toes there towards square leg again. Fielder from fine leg goes to square leg and fields. Milind Chavan there. One for the taking. With that single, the scorecard for that ticks along to 101 for the loss of 2 wickets. They have a very good score here. They are running at a very excellent run rate. Again going on the back foot and driving it. Oh, sir, Vinod Tewadiga this time, just a spectator. Good shot there by the batsman.
along to 110 runs. As my friend always tells me, this is Muflisi mein aata gila. Going on to the back foot and cutting him this time. Good shot there by Rahul Wernicker. Make that 43 for him. And 114 is the scorecard now with that boundary. Good shot there of the back foot there in the extra cover region by Rahul Wernicker. Milind Chavan coming into the act with first over of his bowling quota and going on to the back foot and pulling him on the bounce. Does he well enough to give away a single there? Slightly short of length there, Milind Chavan to begin with. Single for the taking. With that single, the scorecard for that ticks along to 115 for the loss of 2 wickets. Milind Chavan comes up with his bowling quota's first over and innings of 14th over to the batsman Rahul Wernicker. Rahul Wernicker is batting on 43 runs. Onto the back foot and played off his pads there towards wideish of mid wicket. Raj Danganawar comes in and fields the batsman crossover for a single. With that single, the scorecard ticks along to 116 and take Rahul Wernicker to 44. Down the leg side, wide signaled by umpire, acknowledged by my scorer. Lucky enough for Milind Chavan, the ball not connecting the bat there. Shivam Nesaka trying to go down and one knee and sweep it or scoop it, in fact. Beaten all ends up. Good take there by wicketkeeper up to the stumps for and wide. Again, punched it all along the carpet towards mid wicket. Puneet Dixit coming in and fielding. 2 runs for the taking and 2 good runs by this batsman. 2 more for the taking. With those 2 runs, the scorecard for the ticks along to 119 for the loss of 2 wickets. This is good, sensible batting there. The match slipping away, slipping out of Sai Sports. Sai Sports have to really do something quick and fast there. A lot of exercise as well going on from Rahul Naik. And trying to stop up his own bowling there. Also the cover fielder coming in quickly and fielding Raj Danganawar. Milind Chavan putting in efforts to field of his own bowling there. Try to stop it, but the batsman cross over. With that single taken, scorecard further limps along to 120. Rahul Wernicker to face Milind Chavan. Onto the back foot and good fielding and good stop there by the fielder at short cover region.
Good stop there, and this kind of fielding will definitely encourage all the fielders and also the bowler. Good support there. Showing the full face of the blade, driving it off the front foot all along the carpet towards long off. Sushant Kuwadkar comes in and fields the batsman crossover for another single. With that single, it also completes the over. So after the completion of 14 overs, the scorecard reading 121 for the loss of 2 wickets. 121 on the board for the loss of 2 wickets. And to tell you that 14 overs have been bowled and the scorecard rating 121, 45 for Rahul Vernikar. As there will be change in bowling, there will be change in commentary. I asked my co-commentator Pramod Jappe to take on in Hindi. Thank you. धन्यवाद चेतन बेलूर। तो 36 गेंदों का खेल बाकी और पंच किया उस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में आनंद मालवी खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका। 1 रन निश्चित तौर पर बनता हुआ 122 हुआ है स्कोर। 155 की दरकार, 33 रनों की दरकार है यहाँ से लेकर आगे और 33 रन बनाने के लिए अब 35 गेंदों का खेल होना बाकी। लेकिन विकेट तो सिर्फ 2 ही खो रही है इस वक्त। मार्ग राइजिंग स्टार्स की टीम तो उनकी पकड़ अच्छी है इस मैच के ऊपर और अगर इस पकड़ को ढीली बनानी है तो विकेट लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचे हैं अब साई स्पोर्ट्स के पास। तो कुछ अलग करना होगा अब यहाँ से लेकर आगे। दंगनवर की गेंद बैकफुट पर गए, घुमा दिया उस गेंद को, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है। डीप में फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा होता हुआ शिवम नेसरीकर के खाते में और पारी की रन संख्या बनी है अब 123। 1 2 3 2 ही विकेट खो रही है। रोहित देसाई 27 रन बनाकर आउट हुए और नीलेश पाटिल 23 रन बनाकर आउट हुए। वेर्नेकर के लिए फ्लाइटेड गेंद करवा रहे थे, एक आगे बढ़ाकर उस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला सीधी बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं। 46 पर खेल रहे हैं राहुल वेर्नेकर और शिवम नेसरीकर खेल रहे हैं 16 रन बनाकर। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, अंदरूनी किनारा लिया गेंद ने बल्ले का और विकेट कीपर की तरफ गेंद गई है। जगह तो बना रहे थे उस स्क्वायर कट करने के लिए, स्क्वायर ड्राइव करने के लिए, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से गेंद लगी और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। डॉट गेंद के साथ वापस चले राजेंद्र दंगनवर। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, नीचे रही गेंद, उस कवर्स के इलाके में खेला, चुस्त मुस्तैद फील्डर है उस इलाके में, साफ सुथरी फील्डिंग की, गेंद को रोका ज़रूर था लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी तालमेल और समझबूझ के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या बनी है 124। 124 2 ही विकेट खो रही है मार्ग राइजिंग स्टार्स की टीम। अच्छी पकड़ है इस मैच के ऊपर। फ्लाइटेड गेंद, हाफ वॉली बनाई, हाफ वॉली बनाकर शिवम ने ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ के इलाके में गेंद, और जब तक कि लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड करते पार्थ पाटिल 1 रन दौड़कर पूरा किया। 17 पर जा पहुंचे अब शिवम नेसरीकर और पारी की रन संख्या 15वें ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 125 बनी है। अब सूरत हाल यह है इस मैच का कि 30 गेंदों का खेल बाकी और 30 गेंदों में 30 रनों की ज़रूरत है। तो ये मैच ख़त्म नहीं हुआ, निश्चित तौर पर अभी भी एक मज़ेदार मोड़ पर ये मैच है। 30 गेंदें हैं, 30 रन चाहिए, होने को कुछ भी हो सकता है इस मैच में। एक हाथ दूसरा विकेट चटकाने में अगर कामयाब हुए साई स्पोर्ट्स की टीम तो ये मैच में वापस ही कर सकती है, लेकिन ये सेट बल्लेबाज जब तक मैदान पर है। राइजिंग स्टार्स मार्ग 11 की टीम डगआउट में बड़े सुकून की सांस ले रही है, चैन की सांस ले रही है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक अच्छी भागीदारी भी खड़ी की है तीसरे विकेट के लिए, क्योंकि जब दूसरा विकेट खोया था तब 73 स्कोर था और तकरीबन इन दोनों ने मिलकर अब 50 रनों की भागीदारी खड़ी की है तीसरे विकेट के लिए। 52 रनों की भागीदारी तीसरे विकेट के लिए वो खड़ी कर चुके हैं और ये जोड़ी जो है ये सरदर्द का कारण बनी है साई स्पोर्ट्स के लिए। 47 रन बनाकर खेल रहे हैं राहुल वेर्नेकर
और 17 रन बनाकर खेल रहे हैं शिवम नेसरीकर। तो गेंदबाजी का मोर्चा अब दूर वाले छोर से संभालने के लिए आए हैं सुशांत कुवाड़कर ने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडल नहीं रहा उनका। 28 रन उन्होंने दिए हैं और उनको कोई विकेट नहीं मिला। पहला ही ओवर उनका बड़ा खर्चीला चला गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी भी बड़ी अच्छी की है। कुवाड़कर की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, पंच किया उस गेंद को। कवच के इलाके में राजेंद्र दंगनवर एक्स्ट्रा कवर से आकर गिरफ्ते की गेंद को फील्ड करते हैं। शिवम नेसरीकर ने 1 रन पूरा किया। 18 पर जा पहुंचे शिवम और पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 126 रन 2 विकेट के नुकसान पर 126 पर 2। 29 गेंदों का खेल बाकी। 29 गेंदों में 29 रनों की ज़रूरत है। विकेटों का कोई सवाल नहीं है मार्ग राइजिंग स्टार्स के लिए। 8 विकेट अभी भी हाथ में हैं उनके। डगआउट में बड़े आराम फरमा रहे हैं और चिंता भी नहीं होगी उनको, क्योंकि अभी भी दिग्गज बल्लेबाजों की फौज है उनके खेमे में जो इंतज़ार कर रही हैं अपनी पारी का। ओ शॉट हम पुल खेला फाइनल के इलाके में 4 रन और 50 रन पूरे। बहुत ही अच्छी इनिंग्स राहुल वेनेकर पेश कर रहे हैं और
अनंत मालवी के पास गेंद है, सामना करेंगे राहुल वेर्णेकर। अर्धशतकीय पारी उनके चल रही है इस वक्त। एक अच्छी इनिंग्स, एक मैच्योर्ड इनिंग्स जिसे हम कहते हैं, एक प्रगल्भ इनिंग्स उन्होंने खेली है। बड़े प्रतिकूल परिस्थिति चल रही थी 2 विकेट खोने के बाद। अनंत मालवी वापस लौटेंगे। उनके स्टेपिंग्स थोड़े से गलत हो रहे थे, इसलिए उन्होंने गेंद फेंकी नहीं, वापस आए। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा हो रहा है। दिशा से भटक कर गेंदबाजी कर रहे हैं अनंत मालवी। एक और अतिरिक्त रन दे रहे हैं। रन संख्या बनी है 143। सिर्फ 12 रनों की ज़रूरत है। 24 गेंदों का खेल बाकी है। इस गेंद को स्वीप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ संपर्क नहीं किया। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। डॉट गेंद होती हुई अनंत मालवी के लिए। हो, इस गेंद को ऑन साइड पर फ्लिक करते हुए खेला है, थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हुए खेला। स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद जा रही है। 4 रन। वहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है और वहाँ पर एक आराम का चौका मिल रहा है राहुल वेर्णेकर को। अब धीरे धीरे स्कोर तो आगे बढ़ रहा है 147 पर। अब ज़्यादा कोई रोचकता नहीं बची है इस मैच में। एक तरफा सा मुकाबला अब हमें देखने को मिलता हुआ है, क्योंकि अब सिर्फ 8 रनों की ज़रूरत है और गेंदों का कोई सवाल नहीं है। बहुत सारी गेंदें बाकी हैं। राहुल वेर्णेकर सामना करेंगे अनंत मालवी का। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कट करना चाहा, बीट हुए, कोई रन नहीं बना और वापस गेंद लेकर चले अपने बॉलिंग मार्ग पर अनंत मालवी। ओ, स्कूप के अंदाज में खेला उस गेंद को। 1 रन बनेगा उस थर्ड मैन के इलाके में। अब रन संख्या 148, सिर्फ 7 रन दूर। तो मार्ग राइजिंग स्टार्स की टीम आज अच्छी वापसी कर रही है इस टूर्नामेंट में। अब तक उन्होंने लीग मैचेस में खाता तो नहीं खोला है पॉइंट्स टेबल में, लेकिन अब आज कहीं जाकर उनके खाते में अंक होंगे निश्चित। इस बार सीधा ड्राइव खेला है लॉन्ग ऑफ के इलाके में। पार्थ पाटिल आ रहे हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन 1 रन के साथ अब रन संख्या बनी है 149, 149, सिर्फ 6 रन दूर। उठा दिया हवा में गेंद। पार्थ पाटिल ने गेंद को बहुत अच्छी तरीके से रोका। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की उन्होंने उस लॉन्ग ऑन के इलाके में। 1 ही रन बनने के बाद 150 का आंकड़ा। 17वें ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 150। अब सिर्फ 5 रनों की ज़रूरत है और 5 रन बनाने के लिए 3 ओवर का खेल बाकी। नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं राहुल नाइक। राहुल नाइक की ये गेंद इस गेंद को खेला है कवच के इलाके में। रन तो नहीं मिलेगा।
और गेंद फील्ड होकर वापस लौट रही है बॉलर के पास। राहुल नाइक की गेंद, शॉर्ट गेंद डाल रही हैं, पुल किया स्क्वायर लेग के इलाके में फील्डर तैनात, और जब तक कि गेंद को फील्ड करते 1 रन का इजाफा होने के बाद अब रन संख्या बनी है 151, सिर्फ 4 रन दूर। कल 1 तारीख है, 1 अप्रैल, और 2 मैचेस खेले जाएंगे। जेवर गैलरी डायमंड्स वर्सेस बीसीसी मच्चे सुबह 9:30 बजे। और बहुत खूबसूरती के साथ उस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे हैं राहुल वेर्नेकर ने, और ये मैच खत्म हुआ तो 8 विकेटों से जीत हासिल कर चुकी है। अंक अब जा रहे हैं
and other things. Thank you. Parth Patil, make it soon. Lights lit this time like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. If you all can come up here for the presentation ceremony, it would be of great pleasure. Please. First and foremost, the losing captain, if you can come, I'll just have a word with you and finish off quickly. Well, Parth, last time your team looked different. Today it was a different team. You didn't get enough runs on the board. 155 was a good total for defending, but what we did in the bowling side was not so up to the mark. You needed more runs on the board in the end. 155 was not enough for you. 10-15 runs were short for us, but 155 was good total to defend. Everything looked good, but batting, I think you should really have more runs to defend it. And what would you like to tell your team, because there's a mixture of youngsters and senior members in your camp? If you can tell something, I think you can come back strongly, because Sai is a very good side and a very good team. Like, do what they are doing, but give 100% in that. Well said. Hard luck today, but all the best for the remaining matches. Play well. This loss will not affect you much. You can come back strongly. Hopes are high. You can definitely make it for the qualifiers. That is what I wish. All the best for the next matches, Parth. Thank you, sir. Thank you very much. That was Parth Patil. Now I would like to call upon the winning captain. Congratulations, Ravi Pillai, for you. Thank you, sir. And to begin with, a big smile there. You're still not able to smile or not able to accept that you won today. Yeah, today we have won the match, but coming matches are very crucial for us. So we are focusing on that. That's why that seriousness has to be there.
Yes, that seriousness is there on you. And to tell you, the last two times also you played, you came very close, but you just did not cross the line. But today, very comfortably, you crossed the line. Everybody chipping in with bat and ball, and also the finishing was over. Your batsmen were just not leaving it. They didn't let the game slip out anyway. Just kept them tied. You really troubled side sports today. Yeah, actually, last two matches we were actually struggling with the combinations and all. Last match we got to realize that we have depth and we have good batsmen also, and we have good bowlers also. And today they have done it, I guess. With this win, you have proved a point, and definitely everybody will start looking at you. Mark, Rising Stars have started rising and shining, so you'll come back strongly. And all the best for you in this tournament, because it's a very good team. Yeah, thank you, sir. Thank you. Thank you very much. That was Ravi Pillai, the captain of Mark Rising Stars. Now, plenty of awards to be given away. First and foremost, for the best catch, this award to be given away by Mr. Kuldeep Aptekar, and the best catch goes to Darshan Maikar. Then we had to decide for the maximum sixes. This award to be given away by Sunil Sakri. And there were plenty of sixes in this tournament. In this match today, it was decided that the best one will be given an award. Goes to Rohit Parwal. Impact player, this award to be given away by Mr. Ashish Chavan, and the impact player is none other than, for that person, entertained us and he also enjoyed 27 runs, 16 balls, 5 boundaries and 1 6. Rohit Desai, impact player. But you also get, you missed out on a man of the match today. Yesterday you were the man of the match. You'll get many more. Many congratulations. You can also have a jar and some nice shakes for your protein diet. Last but not the least, the man of the match, not a very difficult one today, for performing with bat and ball. Took the game single-handedly and finished it in the end. He was at the crease. Wonderful exhibition of batting of 51 balls and 68 runs with 9 boundaries and 1 6. Rahul Verniger. Well, Rahul, just 2 words with you. First and foremost, congratulations, Rahul. Thank you, sir. It's been quite some time that we've been seeing you, and you missed out on some previous tournament. Last time you were not there, unavailability. Now that you're available, you have proven a point that you are one of the finest players. Yeah, yes, sir. But initially we got the good start there by Rohit Desai and Nilesh Patil. That's where we got the momentum, and from there we never took a back seat from the game. Well said. You knew that what to do. You did not give any chances. You played to perfection. Your shots look good. You yourself looked in good touch there, and you really made it look comfortable in the end. You enjoyed batting out there? Yeah, Gymkhana wicket is always a good wicket to bat on. So it was a really good innings for the team and for me as well. Well said, and congratulations. You have taken many man of the matches. I know that. I've been also officiating you. I've seen you. I've seen you play in other matches also. How do you rate this one, and how do you feel this man of the match after a long time? Now, winning matches for the team is always a good feeling. Yeah, this is also a good feeling for me. Yeah. Yes, you enjoy this moment and this feeling. May you get many more. Keep performing like this, and your team needs you. And the team is gelling on, because Marg Rising Stars is looking a very different team this time. Congratulations. May you have many more man of the matches, and all the best for the remaining matches as well. Congratulations and thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Please, at the hands of Chandan Kundannad, you get a trophy, a t-shirt, and also the DTH connection from Metrocast from Nagesh Chabria. 1 year subscription free, worth 7,500. Thank you very much. Enjoy this moment. Yes, and both of you can come behind for the photograph. That is all that we have from the presentation party this evening. Thank you very much, and for you people, it's good night.